गुड आफ्टरनून ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, ठीक है, जैसा तुम बोलो. एंड गुड आफ्टरनून एवरीबडी ऑनलाइन. NABARD is not only a refinancing agency. Refinancing agencies are those which connect the lenders and borrowers. I hope Ved Prakash you get it. But NABARD also lends to people. Okay, let's get started. We had talked about steps taken by government to remove poverty. There are few things in your notes also. So in any case, we will be using your notes. But I'm dictating few things to you on what are the steps taken by the government to remove poverty, and you work on that. So there was just one thing. Those who are appearing economic services, just keep it in mind. I will not be extending the test date beyond 26th. क्योंकि अभी तक आप में से काफ़ी कम लोगों ने टेस्ट दिया है. तो जो पहला टेस्ट है, जो टेस्ट 2 पेपर 2 का, वो 25th लास्ट डेट है. 25 के बाद आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे. वो आप ये दिमाग में रखिएगा. नहीं तो मतलब ये मुझे लगता है डेलिबरेट ब्रेकिंग ऑफ रूल है कि 11 तारीख से 25 तारीख तक मैं नहीं दूंगा, लेकिन 28 तारीख को आके बोलूंगा सर आज ही देने का मन कर रहा है. मतलब तुम अगर 28 को प्रिपेयर हो सकते हो तो 25 को भी हो सकते हो. खैर, उसमें मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा तरीका भी निकाल दिया है. जो भी लोग 11 से 25 के बीच में नहीं दे पा रहे हो, इन केस यू वांट टू राइट द टेस्ट आफ्टर प्रीलिम्स, वी विल बी विलिंग टू टेक दैट. Alright, so if you are unable to write the test in the given time frame, then the next option for you is to write it after the prelims exam. All those of you who are enrolled in IES, online plus offline, please keep that in mind. Alright, okay, and I follow the same pattern in your optional papers also. I don't allow any further. मुझे लगता है मैं काफ़ी flexible already हूँ कि 11 से लेके 15 दिन में अगर तुम टेस्ट नहीं दे पा रहे तो फिर तुम 2-4 दिन मत, तुम 2 महीने और मत दो, फिर आराम से मई में देना कि तुम भी पता रहेगा प्रीलिम्स खत्म, अब एग्जाम ही देना है IES का. So do that. So take it till 25th. Today is still 22nd. You have 3 more days. If by any reason you can't write it till 25th, then we will shift it to after prelims. This test number 1 of IES. Okay, let's see this then. तो कुछ चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप ये चल कर लिखते जाइए, फिर साथ साथ आगे बढ़ेंगे. So you write first 1. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. And we will keep calling it MG Narega. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. And you write the first, okay, before you write anything, I'll make you write it, but understand this. So we introduced the act in 2005, and initially it was introduced as a pilot project in 2006, all right, over around 100 districts of India. And then in 2007, 7 and 8, over the years, by 2008, it had been stretched all over India. So it was spread all over India by 2008. Under the act, the government says that we will be promising minimum 100 days of employment to any demanding individual in the rural areas of India. कोई भी individual जो rural area में है, अगर वो demand करते हैं कि उन्हें employment चाहिए, तो minimum 100 days of employment will be guaranteed to them on a government project or any other project within the rural area. This was the idea of MG Narega. Then over the period there has been few changes. In 2014, government appointed a committee called Mihir Shah Committee. And Mihir Shah Committee gave information about how to improve Manrega. Okay, they gave some information. They said how to improve Manrega, how to improve on the structures, training of the farmers, etc. and the workers on Manrega. So after Mihir Shah Committee report, now we have better. In fact, Mihir Shah Committee report के बाद ही जियो टैगिंग शुरू हुई. नहीं तो पहले क्या करते थे, एक पॉन्ड डिग करते थे, उसी के 4-5 एंगल से फोटो लेके 4-5 साल तक पैसे लेते थे कि हमने नया पॉन्ड खुदवाया है विलेज में. तो अभी जियो टैगिंग से होता है कि आप एक ही जगह पे 4 बार तो नहीं पॉन्ड
डिग कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई मेहर शाह कमेटी के बाद। टाइप ऑफ असेट की शुरुआत हुई, दैट व्हाट काइंड ऑफ असेट्स आर यू यूजिंग। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत हुई, दैट आधार वेरिफिकेशन अकाउंट हो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो। ऑल दीज वर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेहर शाह कमेटी। आई एम सेइंग दिस फॉर अ रीजन. If by chance you read somewhere or people tell you that look, government was the party in government was criticizing Manrega earlier and now they are using Manrega, but what we are using is Manrega 2.0. It is not the same Manrega which was used before 2014. So I think we should be conscious about those changes. All right. So now we put down few things. You write मनरेगा की definition आपकी किताब में है, मतलब नोट्स में है, तो मैं उनको नहीं लिखवा रहा आपको, मैं आपसे कुछ और डिस्कशन उसके ऊपर कर रहा हूँ. You write, तो मैं फिर रिपीट कर दूँ, मनरेगा is about 100 days of employment to promise to every person who demand it. All right. You write in that मनरेगा was introduced in 2005 and it was implemented as a pilot project over 100 districts of India, in 2006. It has been expanded as an all India program from financial year 2007-8. Full stop. In the same thing you write, it is a demand driven program. It is a demand driven program in which any individual demanding 100 days of job will have to be provisioned with that facility. Any failure to provide it will imply that the government will have to give income compensation or monetary compensation to the individual. The main objectives of Manrega are social security through assured employment. I repeat, social security through assured employment and
and protection to rural workers, protection to rural workers from very low wages. Then you write within that benefits of Manrega, benefits of Manrega. All right, you write in that first, it has targeted successfully the vulnerable sections, full stop, more than 17% of beneficiaries, more than 17% of beneficiaries are scheduled tribes, comma, more than 20% are scheduled caste, and approximately 58% are women. All right, that is one example of how Manrega has been able to target better. Second, you write, it has acted as a source, it has acted as a source of absorbing social security. It has acted as a source of absorbing social security by giving employment to people during distress, which was observed during COVID pandemic, when there was lack of jobs due to lockdown and recession, and Manrega budget had to be increased. Manrega budget had to be increased from rupees 73,000 crore in 2020, rupees 73,000 crore in 2020 to rupees 1,06,000 crore, rupees 1,06,000 crore in 2021. It was further kept at 98,000 crore, 98,000 crore in 2022.
That is the social security we talk about. That, with Manrega, the social security was given because when people were in distress, people going back from urban area to rural area, looking for a job, you increase the subsidy. And in that case, you can see how people are getting benefited, and you can make sure that employment is not an issue, at least for survival. Then you write one more. You write, the, the transfers under Manrega, the transfers under Manrega are direct benefit transfers, which reduce the possibility of corruption. Then you write, after Mihir Shah committee report, Mihir Shah committee report, MIHIR Mihir Shah committee report, there is geotagging of asset. I hope you understand. Geotagging is that now you know where is the asset being made, and through satellite you can locate it, that this asset is made here. So geotagging of asset, comma, direct benefit transfer, and qualitative assessment of asset, to assure there is improved quality, and actual job creation. Improved quality and actual job creation. And one more you write, it has helped in giving support to rural wages, because it becomes an indirect minimum wage. Set in the rural area, and all other employers will have to give at least that wage to the workers. This has helped in supporting rural wage growth in the last 15 years. Okay, there are few things you will read, since I said something and sometimes the newspapers or some of the researchers talk other way around, so I'm clarifying myself. One, when you hear that real rural wages have been declining in India. Now, whenever such statements are given,
one should look at the time frame. So the real rural wages have been declining in India, okay, in what duration? Over what time period? So they have been declining in India between 2021 to 2024. All right, that is where we have seen the decline. But what has happened between 21 and 24? There has been a COVID pandemic creating a rural distress, and there has been massive inflation, especially food inflation, which affects the rural areas more. You understand that? तो एक ऐसा टाइम पीरियड आप पिक कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ कम है या डिस्ट्रेस ज़्यादा है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द इकोनॉमी ऑल्सो, और तब आप कहेंगे देखिए रूरल वेज तो कम हो रहे हैं. तो ये मुझे लगता है चेरी पिकिंग है. अगर हमें सच में रूरल वेज जानना है तो हमें दो चीज़ें करनी चाहिए, और मैं टेस्ट सीरीज में आपको वो दोनों चीज़ें का डिटेल भी दूंगा. बट हमें दो चीज़ें करनी चाहिए. वन, एक हमें देखना चाहिए, वी शुड सी फर्स्ट ऑफ ऑल that what is the trend of rural wage in the last 10-15 years in the country. Because whenever you set a trend, some of you must have been trained in econometrics, some of you might be researchers, some of you, those of you would surely appreciate what I am talking even better, that if I am looking for a trend variable, then I cannot look for a 4-5 sample set. I will have to look for a variable of at least, or a sample of at least 15 to 20 at least, if not 30-35. तो चलिए 30 साल का ट्रेंड ना भी लें क्योंकि भारत बदल गया बहुत ज़्यादा, लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया. कम से कम पिछले 10-12 साल का ही ट्रेंड लें, 15 साल का ट्रेंड लें और देखें रूरल वेज क्या हो रहा है. अदरवाइज अगेन नहीं रिपीट, कोई कहे रूरल वेज आज गिर रहा है, कोई बोले 2008 से 12 के बीच में बढ़ रहा था, कोई बोलेंगे 14 से 17 के बीच में तो और ज़्यादा बढ़ रहा था. ये तो सरकार के व्हाइट पेपर और ऑपोजिशन के ब्लैक पेपर जैसा डिस्कशन हो जाएगा कि दोनों को बस अपनी अपनी बात प्रूफ करनी है, एक पेपर वेपर लिख के बोलो ऐसा हो गया, और उसका कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता. आप सोच के देखिए, सरकार ने व्हाइट पेपर निकाला या ऑपोजिशन ने ब्लैक पेपर निकाला, उसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई खास. क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि इट्स कमिंग विद अ पॉलिटिकल मोटिवेशन, नोबडी बॉदर्ड. बट व्हेन यू कम विद एन ऑनेस्ट मोटिवेशन you can talk better. So number one, whenever you talk rural wages or any wage for that matter, income levels, prices, you should take a trend of at least 15 years or 12 to 15 years to get a good idea. Trend over 3 to 4, and especially given the so many black swan events as we call them that have been happening over last 3-4 years. So one black swan event kya hai? Swans are never black. So a black swan will be sighted once in 100 years. ठीक है, काला हंस 100 साल में एक बार दिखेगा, ऐसी बात मानी जाती है. तो उनको कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स. कोविड पैंडेमिक, वन ब्लैक स्वान इवेंट. Countries going to war the way they have gone to right now, say Russia and Ukraine or Israel, Hamas, another black swan event in the last 30 years human history if you see. The major wars that we had seen before, the major wars, जो 2-2 साल चले, 4 साल चले, जैसे ईरान इराक वॉर, वो 7 साल चला, 8 साल चला, 1980 to 1988. तो वो मेजर वॉर्स का जमाना था. लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमने 8 साल 10 साल चलने वाले वॉर्स नहीं देखे. हाँ ठीक है, टेरर अटैक्स देखे, ISIS देखा, सीरिया के डिस्टर्बेंसेस देखे. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्ल्ड डिस्टर्ब नहीं था, लेकिन कंट्रीज एक दूसरे को अटैक कर दे ऐसा माने जाने लगे था कि ये नहीं होगा. Those days are gone that countries will attack each other. But then Russia attacks Ukraine or Israel attacks or Hamas attacks Israel, then the counterpart in Palestine, all that is happening. तो ये जब आप देखते हैं तो ये disturbance again black swan है. उसमें फिर multiple participants. अब Israel Hamas war इतना बुरा नहीं होता वर्ल्ड के लिए, थोड़ा बुरा होता because it would have disturbed Middle East, but it became worse when the Houthi rebels start pounding the Red Sea. So that makes things worse because of the war. तो ये चीजें होती हैं. रशिया यूक्रेन वॉर क्यों खराब होता है? Because Russia and Ukraine are suppliers of almost 60% of global food grain, almost 70% of global fertilizer. So obviously if these two countries are at war, we are in trouble globally. You understand that? So this is a challenge that we need to look at. ये black swan events हैं. फिर और क्या black swan event है? The massive inflation supply side that followed after pandemic. Last time it was seen was in 1973 with the oil shock. कभी ऐसा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन दुनिया ने नहीं देखा था पिछले 50 सालों में, जो इस बार देखने को मिला. तो 7% इन्फ्लेशन, 10% इन्फ्लेशन. अमेरिकन had very well forgotten that inflation. So that was another black swan event that we see happening. तो जब इन सब के बीच में आप देखेंगे और कहेंगे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा, आप खुद को एक प्राइवेट इन्वेस्टर बना लीजिए. You make yourself a private investor. Government is giving you, say, cheaper interest. Say the government is giving you investment from the government side. Say the government also gives you ease of doing business. You will still not invest given the uncertainties around you.
तो ये बहुत ही बेईमानी है बोलना कि इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं बढ़ रहे हैं। दुनिया में कहाँ बढ़ रहे हैं? कौन सा देश है जहां बढ़ रहे हैं? क्योंकि इवेंट्स ही पिछले 3-4 साल के लगातार ऐसे होते जा रहे हैं। इट्स कंटिन्यूअस हैपनिंग ऑफ इवेंट्स विच इज डिस्टर्बिंग ऑल ओवर। खैर ये एक बात हुई, तो दिमाग में रखेंगे आप that if somebody says that real rural wages have been declining, the question is since when? And if the answer is after pandemic, well then the answer is obvious that the reason is not that we are doing something bad there. The reason is there's too many things happening around us. हाँ, वहाँ पे दिक्कत क्या है? जो सरकार के चेस्ट थंपिंग लोग होते हैं, वो इन बातों को हाईलाइट करते हैं। देखिए, सरकार के नेतृत्व में भारत विश्व का सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था है पैंडेमिक के बाद। हम अच्छा नहीं कर रहे, दूसरे बुरा कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है। पैंडेमिक ने चाइना को जोरदार हर्ट किया है। So it has hurt because that is where it originated, and they went for zero COVID policy for very long. They hurt their supply chains. It hurt them. Xi Jinping ने भी चाइना को हर्ट किया है, कोई डाउट नहीं उसमें। मैं आपको पहले बता चुका हूं that the disturbance happens when you challenge your partners. So that is also hurt, but COVID has hurt them badly. So Chinese performing badly. COVID has created disturbance in Middle East, which is affecting North Africa. So some of the fast-growing nations of North Africa performing badly. After COVID and supply chain disruption and the war in Europe, Europeans are doing badly. It has harmed them badly. तो ये नहीं है कि इंडिया अकेला। हाँ, आप ये कह सकते हैं नहीं सर, सबके बाद भी हम तो अच्छा कर रहे हैं। मैं तो मना नहीं कर रहा, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम 8%, 9%, 10% नहीं ग्रो कर रहे हैं, हम 6.5% ग्रो कर रहे हैं। मतलब हम बाकियों से अच्छा कर रहे हैं इन अ डिफिकल्ट वर्ल्ड, पर हम अपने पोटेंशियल पे अभी भी नहीं है। हम अच्छा कर रहे होते और ज्यादा इफ वी हैड इंप्लीमेंटेड लेबर लॉ रिफॉर्म्स, if enforcement directorate was not used as a tool of harassment, हम अच्छा कर रहे होते। और अगर सेंट्रल स्टेट में फेडरलिज्म बेहतर होती, अगर ये सब भी होता तो हम पैंडेमिक के बाद और अच्छा कर रहे होते। ये मेरा कहना है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं हम बुरा कर रहे हैं। बिफोर यू अंडरस्टैंड मी इनकरेक्ट, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग वी आर डूइंग बैड। आई एम ओनली सेइंग दैट वी कैन डू मच बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग। इट इज जस्ट दैट अदर्स आर डूइंग नॉट सो गुड, सो वी आर लुकिंग इवन बेटर। अंडरस्टैंड दैट। सो अब सोचिए, इंडिया जैसे कंट्री में फूड इन्फ्लेशन रेगुलर बेसिस पे, यही हमारे बुरा करने का एक पहला प्रतीक हो जाता है। That we are not doing well in controlling our food inflation, because we can't say that Russia-Ukraine war will create food inflation in India. We are the food growers. हमारा टमाटर उनके वजह से थोड़ी महंगा हो गया, ना ही हमारा प्याज उनके वजह से महंगा हुआ। So price of onion rising, price of tomato rising is mismanagement. It's not COVID pandemic or it's not Russia-Ukraine war. ये बात समझा रहा हूं, तो ये मिक्स्ड बैग है। तो उस चक्कर में क्या होता है, जब सरकार के सपोर्टर्स बोलते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, तो जो ऑपोजिशन है वो सारी चीजों का मत्था सरकार पे ही मर देते हैं कि कोविड भी सरकार की वजह से ही हो गया। उनका रिएक्शन ऐसा हो जाता है। वो कहते हैं आप पिछले 10 साल का ग्रोथ कैलकुलेट करिए, बट 10 साल का ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करें अगर बीच में एक पैंडेमिक आ रखा है? देन हाउ डू आई कैलकुलेट दैट एज अ नॉर्मल ईयर? सो दीज आर द चैलेंजेस पॉलिटिकली। तो उसमें तुम बहुत बातें पढ़ोगे। जैसे कल एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, उनकी गलती नहीं है, वो किसान संघर्ष समिति के चेयरमैन है, तो वो तो लिखेंगे ही, बट मुझे उम्मीद अगर तुम वो ढूंढ पाए तो समझ लो कि तुम मेरे सही बातें समझ गए हो। नहीं ढूंढ पाए तो मैं बता रहा हूं। जैसे उस आर्टिकल में काफी बातें लिखी थी, मैं 3-4 क्विकली बता दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। One thing written in that article was that we give guaranteed minimum wages in industry, so why can't we do that in agriculture? Well, we give guaranteed minimum wages in industry, resulting in huge unorganized sector. The person either didn't know that or tried hiding it. तो वो मिनिमम वेजेस फॉलो कहाँ हो रहे हैं इंडस्ट्री में? सेकेंड थिंग सेड वाज वी आर गिविंग एफआरपी इन शुगर केन, व्हाई कांट वी एक्सटेंड इट टू अदर क्रॉप्स? अगेन द फेलो इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूज एरियर्स इन शुगर केन। You see that? The third thing the fellow says is that government doesn't have to procure all the crops. 16 lakh crore worth of crop is produced, out of which 5 lakh crore is either wasted or used for wages or used as exchange within the villages. So government will have to only look for 10 lakh crore, and finally the subsidy they will need is 1.5 lakh crore. Again, this is a comparison assuming that the rest 8.5 lakh crore will be bought by the market. There was no discussion of what if the market doesn't buy. What do we do then? What's our plan B? They said, oh, corporate taxes have been reduced and that resulted in a 1.5 lakh crore loss, while this is a similar amount. Why can't we give this? But corporate tax collection has gone up by 80% in India, so that loss is only notional. जो आपको मैं public economics में सिखा रहा था, tax expenditure, तो notional loss है, उसको real loss कैसे मानेंगे?
क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन तो 5 लाख करोड़ था इन 2019, आज 9 लाख करोड़ है by 2025, and GDP has grown not by 80%, nominal GDP. So there is a tax buoyancy. So how do I equate the two? और आश्चर्य की बात है कि ऐसे सभी आर्टिकल्स में कभी बात नहीं होती कि किसानों के लिए पैसा निकाला जा सकता है स्कूटर्स इंडिया बेचकर, भारत मोटर पंप बेचकर, भारत बॉल बियरिंग्स बेचकर। इनको बेच के क्यों नहीं पैसा निकाला जाए किसानों के लिए? अब सोच के देखिए, यह चर्चा होनी चाहिए ना। या फिर हम किसी आइडियोलॉजी से ग्रसित हैं, वी आर विक्टिम्स ऑफ आवर ओन आइडियोलॉजिकल बिलीफ कि नहीं मैं खराब पब्लिक सेक्टर चलने दूंगा लेकिन अच्छे प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स लगाऊंगा। तो ये फूलिशनेस के ऊपर बॉर्डर करता है, दैट आई एम नॉट नोइंग हाउ टू एलोकेट माई रिसोर्स वेल। हमें किसानों को सही फ्यूल पहुंचाना है ना, वो फ्यूल बचाने का बहुत आसान तरीका है। हमारे देश में करीब करीब 20,000 लोग हैं जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर्स हैं। इनके आगे 2 गाड़ियां चलती हैं, पीछे 2 गाड़ियां चलती हैं, एक एक गाड़ी कट कर दीजिए। जो पायलट कार्स चलते हैं और उनको सुविधा मिलती है घूमने की, एक एक गाड़ी काट दीजिए बस। हो सके तो 2-2 काट दीजिए, गनर बैठ जाएंगे अपने जीप में उनके साथ या उनकी गाड़ी में उनके साथ। इतनी सारी सिक्योरिटी हम क्यों दे रहे हैं और इतनी गाड़ियां क्यों चल रही हैं? फ्यूल वेस्टेज है, फ्यूल बचाइए, किसान को दीजिए। गलत लोगों को सब मत दीजिए ये प्रोटेक्शन। किसी भी आदमी जो नॉन डिजर्विंग है, अगर एमपी नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, उनको एक्स्ट्रा रीजन से अगर आप देंगे तो ये तो सरकारी जैसे पहले के समय में राजा साहब लोग सोना का हार फेंकते थे, वही हो गया ना कि अच्छा तुम मेरे सपोर्टर हो या तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें ये सपोर्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका गांधी गेटिंग Z+ सिक्योरिटी, वाई शुड शी गेट इट? अब कोई अगर बोलेंगे नहीं देखिए उनके पेरेंट्स ने इतना सैक्रिफाइस किया देश के लिए, तो भाई आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पेरेंट्स आर्मी में होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके पेरेंट्स पुलिस में होंगे, बहुत सैक्रिफाइस किया, मिलना चाहिए प्रोटेक्शन फिर तुम्हें भी। मेरे पापा जज थे, पता नहीं कितनों को सजा दिलवाई, सबके बाल बच्चे निकल के मुझे पीटना शुरू हुए, फिर तो मुझे भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और जितने जजेस हैं सबके बच्चों को मिलना चाहिए। ऐसे थोड़े लॉजिक पे देश चलता है। You can't run a country on that logic. What you need to just do to make sure is efficient, again, rules. If tomorrow Mrs. Vadra becomes the minister or a member of parliament at least, she's deservingly getting a security. Become one and get a security. लेकिन अगर आप हैं ही नहीं तो आपको सिक्योरिटी किस बात की मिलनी चाहिए? ये तो फैमिली रूल बढ़ाने की बात हुई ना। और ये आई स्क्रैच माई बैक यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाली कहानी है कि जब मैं भी हट जाऊंगा पावर से तो मुझे देते रहना, जैसे तुम जब पावर में नहीं हो मैं तुम्हें देता रहा हूं। ये सिस्टम हमारे यहां चला जाता है। अब देखेंगे बहुत जगह शादियों में लोगों को देखा है मैंने तो सवाल पूछ लिया था, फिर शादी नहीं बर्थडे पार्टी थी, फिर मेरे वाइफ ने बोला शादी में नहीं जाते हो बर्थडे पार्टी में भी मत जाया करो। मैंने जेन्युइन सवाल, अगर कभी कभी मैं सवाल पूछता हूँ सही मन से, लेकिन वो मेरे वाइफ बोलते हो तुम रैगिंग करते हो। मेरे रैगिंग सीरियसली नहीं करता। एक मेरे रिलेटिव आए, वो 78 ईयर्स के थे उस वक्त, और उनके साथ 2 गनर्स थे। ही इज अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर। उनके साथ 2 गनर्स थे। तो लोग उनसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे बोलते बोलते बस यही बोला कि पिसा जी ये गनर्स आपके साथ कैसे हैं? आप तो रिटायर हो गए 18 साल पहले, तो आप तो पब्लिक मनी मिसयूज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ऐसा? क्योंकि ये गनर्स तो आपको आपके जूनियर ने दे दिया होगा साथ जाने के लिए, और आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो 78 के हो गए। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं। एनीवेज, फिर नाउ आई एम बीइंग टोल्ड टू कीप क्वाइट, सो on many cases I do keep quiet. But you think of it, if you go by the basic logic, इतने सारे लोग होंगे जो पुलिस से रिटायर करेंगे, वो अपने जूनियर से ये मदद क्यों लेते हैं कि मैं गनर लेके जाऊंगा एक बर्थडे पार्टी में? ये तो इमोरल है टू से द लीस्ट। जरूरत नहीं है करने की। ये अगर हम चेंज करें तो कितने पैसे बचा लेंगे आप सोचिए। अगर 1 लाख जगह पर ऐसे 1-1 करोड़ रुपए भी खर्च हो रहे हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। और ऐसी जगहों पर तो अगर 1 रुपया भी खर्च हो रहा है तो बात उठनी चाहिए। Then why are you wasting public money? It's taxpayers' money. Respect that. Don't misuse it. You use it. No problem. Those who are in office, those who are doing a great job, they're doing hard work, should use it. But it should not be misused. My only point is that. This is misuse, the examples I'm giving you. It's a misuse of system. आप
इतनी जगह जाएंगे ही क्यों? मान लीजिए मैं गवर्नर हूं या चीफ मिनिस्टर हूं या प्राइम मिनिस्टर हूं या कोई और मिनिस्टर हूं, मैं क्यों इतनी जगह जाऊं जहां पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात बन सकती है? क्यों ना मैं अपने घर में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात बना लूं, प्रोवाइडेड मुझे कोई ऐसी बात ना करनी हो जो मैं रिकॉर्ड नहीं होने दे सकता। नहीं तो नॉर्मल सी मीटिंग अगर करनी है, डू इट ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, फिनिश इट ऑफ। Many good chief ministers and the prime minister himself, they are already doing it. इसमें टाइम भी बचेगा आने जाने का, रिसोर्सेज भी बचेंगे। ये आपको बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ सिखा रहा था, फिस्कल कंसोलिडेशन के एग्जांपल्स हैं ये। That you don't need to attack necessarily कि नहीं कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दो, वेल्थ टैक्स लगा दो, उसके आगे भी दुनिया है। पढ़ो लिखो थोड़ा, पता चलेगा और क्या करके पैसे बचाकर दूसरी जगह लगा सकते हो। 2 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं हम लोग, और वो सब्सिडी अगर फार्मर तक नहीं पहुंचती, रैशनलाइज कर लो, पैसे बच जाएंगे, कम से कम 1 लाख करोड़ 80,000 करोड़ बच जाएंगे। तो ये समझा रहा हूं दैट इफ वी कैन डू दैट, दैट इज द वे टू इंप्रूव द सिचुएशन, द सिस्टम, एंड देन द मनी कैन बी यूज्ड मच बेटर फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स द पीपल हैव टू टॉक अबाउट इट. Government will never do that. Government is the beneficiary. Beneficiaries never say, don't give me the benefit. It's the other side which has to raise it up and say, look, this is wrong benefit. This you should ideally not take. You know, it's not ideally a good thing to do. People then have a number of reasons to do that. जैसे मैंने अभी कहा ना कि क्यों वो प्रोटेक्शन ले लिए मेरे रिलेटिव ने आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ लोग कहेंगे अरे मैंने इतने दिन देश की सेवा की, थोड़ा सा इतना भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकते, क्योंकि आप एक नियम के अंदर देश की सेवा कर रहे थे, अब वो नियम खत्म। इट्स लाइक सेइंग कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं फिर भी तुम्हें लेटर भेजूं, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, इतने दिन मैंने बच्चों को पढ़ाया, अब उसके बदले तुम मुझे पैसे दो। हंसने वाली बात है ना ये आपकी? तो सोचिए ऐसे ही तो हंसने वाली बात है ना कि मैं रिटायरमेंट के 15 साल बाद भी अपने साथ एक गनर लेके घूम रहा हूं सरकारी पैसे पे। हास्यपद है, इट्स लाफेबल। बट हम लोग उनको देख के सकते में आओ में रहते हैं, अरे बड़े आदमी हैं, अरे रिटायर्ड कमिश्नर थे, इनके पास तो रहना ही चाहिए। क्यों? उनके पास क्यों रहना चाहिए? अमिताभ बच्चन जी को क्यों मिलना चाहिए प्रोटेक्शन? वो चाहे अपने लिए पूरी मिलिशिया रख सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन अलग से देने की क्या जरूरत है? अब बोलेंगे वो नेशनल असेट है, बहुत सारे लोग हैं फिर जो नेशनल असेट है, सबको फिर तो या तो प्रोटेक्शन दिया जाए थ्रेट पर। तो जैसे ये बात आती है ना, होम मिनिस्ट्री विल सी द थ्रेट परसेप्शन, अकॉर्डिंगली डिसाइड हु इज गिवन विद सिक्योरिटी। यू आर मेकिंग इट डिस्क्रिशनरी, नाउ इट्स फेवर, पीपल विल लॉबी फॉर दैट फेवर। मेरा भी थ्रेट परसेप्शन में नाम डालो, मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी फिर क्या बन जाती है? रुतबा दिखाने का तरीका। It becomes a method to show that look how deeply I am connected. I have people given by the government who can do it. That is my limited argument, that this is not fiscal consolidation then. Common people like me and you don't get that protection, and it's not that we contribute nothing to this system. So understand that. Everybody is contributing in their own domain. इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपके पेरेंट्स हैं अगर पुलिस में, आपके पेरेंट्स हैं अगर आर्मी में, तो आप भी तो सोशल वर्क, आपके पेरेंट्स भी तो देश की सेवा कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं दिन रात पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, और विश्वास कीजिए पूरी मेहनत से पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, तो उसके वजह से कोई प्रोसेस में तो मैं भी अपने बेटों से नहीं मिल रहा, तो ये तो मेरा भी देश के लिए सैक्रिफाइस हो गया। अब मैं अलग से देश से पैसा मांगू इसके लिए? तो यही बन गए हम लोग, मदर के लिए सैक्रिफाइस करो, फिर मदर को बोलो देते क्या हो इसके बदले। यही बने ना फिर हम। Because if I'm sacrificing for my mother, which is my country, then what's the problem? I mean, what am I asking for? Go ahead and do it. You know, कुछ मिल गया उसे बढ़िया मानो, अच्छा जो मिल गया बहुत बढ़िया, ही तो एक्स्ट्रा मिल गया मुझे लाइफ में। ये आपको समझा रहा था मैं, रुक कर इसलिए बोलने लगा, because the budgeting for मनरेगा, the application of Manrega and many such programs, but these suffers because we don't actually implement it the way it is expected to, or way it should be. So these are the major challenges we observe at times, and due to that the wage rates can go down many times. Due to that people are not literate many times. मैं फिर repeat करूँगा, agriculture पढ़ाते हुए ad nauseam बोल चुका हूँ, we cannot make our rural area better unless we don't invest in the humans. Make school world class, make colleges better, invest in hospitals. ये low hanging fruits हैं, इनको करने के लिए नए सिरा से कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा। ये भी नहीं कि नई स्कूल की बिल्डिंग बनाओ या कॉलेज के लिए बिल्डिंग बनाओ, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ज़्यादा टीचर्स रिक्रूट करिए,
उन टीचर्स को बता बोलिए कि आप रिसर्च करिए, रिसर्च आपका अपना होगा, इट विल बी योर रिसर्च, गवर्नमेंट वोंट टेक ओवर दैट रिसर्च, and you can make money from your research, teach in the college, but tomorrow if you don't perform well, we will sack you. So come under a 5-year contract, 7-year contract, rather than a 35-year permanent job. People will do far better in the college. And tell the students that if you don't study well, you will fail, that's your problem, we are teaching you well, and we will set a tough paper, or a rigorous paper. Come and study well. If you don't do that, not our headache. Then the students will push the professor, sir, teach well. It's a question of my career. And the professor will know I've got to teach well, otherwise the students will rate me incorrect. That is what they do in developed countries. मैंने ऑप्शनल में भी बोला, लेकिन शायद वो हुआ नहीं. मैंने बोला था कि आपको एक रेटिंग पेपर मिलना चाहिए, तो मिला था आपको? चलिए अच्छी बात है कि मैंने बोला था that I must be rated by my students, how am I doing and what can I improve upon, and they become learning experiences. कभी कभी आप कुछ मैसेज भी मुझे देते हो, मैं उससे भी कुछ चीज़ें सीख लेता हूँ कि हाँ ये काम कर लेना चाहिए. जैसे मैं तुम्हें लेक्चर दे सकता हूँ, तुम भी मुझे दे सकते हो, बता सकते हो. लेक्चर थोड़ी हुआ, वो एक दूसरे की भलाई चाह रहे हैं. अगर तुम्हें अच्छा भी लगा कुछ पढ़ाना, तो मुझे पता तो चले अच्छा मैं कुछ ठीक काम कर रहा हूँ. It is just that. Then end of the year I see it, all my reviews, that what am I getting, how can I do myself better. कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो चलो वो भी ठीक है. पर अगर आप मुझे रेट करेंगे तो मैं भी दिमाग में रखूंगा ठीक पढ़ाऊँ, और अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैं फेल हो सकता हूं, तो वो भी पढ़ेंगे. कॉलेज को ये चाहिए कल्चर, कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं. कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आपको पता ही आईएएस बनने के लिए पढ़ना है, जम के पढ़ोगे ही, और मुझे पता है कि भाई तुम ठीक से नहीं पढ़े तो मैं अगले साल कैसे पढ़ाऊंगा किसी को. सो वी आर ऑल इन अ मार्केट हियर, वी गॉट टू डू वेल, बट नॉट इन द कॉलेज. नो, एंड कॉलेज कैन नॉट बी अ मार्केट, स्कूल कैन नॉट बी अ मार्केट. वी कांट मेक एजुकेशन अ मार्केट इन दैट सेंस. सेम विथ हेल्थ केयर. वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उन पर ध्यान दें हम, अपने आप empowerment होगी. If we can work on that. So this is where I think our policy should gradually focus on. अब मैं तुम्हें मनरेगा में ही उस तरफ ले जा रहा हूँ धीरे धीरे. You write in that challenges, and within challenges you write, yes. The growth rate of investment has not picked up anywhere in this world, not only in India. People are saying that investment has not picked up in India. That growth rate has not picked up anywhere in the world. And that is because of various reasons. I mean, after subprime crisis, there is no country in this world which has been able to reach the same level of investment growth or investment proportion which it was at before subprime crisis. कोई देश नहीं पहुंचा है. Like we were at 35% investment, 36% investment. We reached 38% by 2011. But then the crisis hit us, the NPAs happened, and so on. The investment came down to 28% of GDP by 2019. Today it has come back to 31% of GDP, 32% of GDP by 2024. So it's going up again, but it will go up slowly, plus the uncertainty won't let it grow very quickly. This is what I was saying. And the developed world or the developing world, I see no major country. अब कोई एक एग्जाम्पल लाकर बोले देखिए सर इरिट्रिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, तो वो एक अलग बात है. लेकिन मैं मेजर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ. Nobody is seeing high investment. Even the big investors like Chinese or Japanese, we don't see them making huge, real investments. So that is the challenge. Look at change in FRBM. FRP. No, see, again understand. The message of FRP is make a promise that you can fulfill. Otherwise the promise will not be fulfilled. FRP का वो promise है जो fulfill ही नहीं होगा. FRP में हम कहते हैं कि जो मैंने आपके लिए टारगेट सेट किया है वो आपको मिल्स पे करेंगे, और मैं जब मिल्स आपको पे कर देंगे तो मैं मिल को पे कर दूंगा. तो मुझे अच्छे से पता है कि मिल्स के पास औकात ही नहीं है कि वो पे करें, क्योंकि मैं उनको बोलता हूं कि शुगर केन खरीदिए कॉस्टली और शुगर बेचिए चीप. They will never be able to get as much money to pay the farmer, and therefore the government will never pay the money to the mill, and the farmer will live with the arrear. That is a faulty policy. It needs an overhaul. और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि महाराष्ट्र में जो नॉन सूटेबल एरियाज हैं जैसे विदर्भ, वो कैसे शुगर केन ग्रो करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में चीनी मिल है. So with sugar mill, you grow sugarcane, and 73% of water for irrigation in the district is used for sugarcane cultivation, which is such a waste of resource.
तो ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए, चेंज नहीं हटाओ, उसको ओवरहॉलिंग करो और नया सिस्टम लाओ जहां फार्मर्स को, जो मैं पिछली क्लास में तुम्हें सिखा चुका हूं, कि फार्मर्स को इंसेंटिव दो टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स. व्हाई स्टिक ओनली टू शुगर केन? इट्स अ वाटर गजलिंग क्रॉप. And why should be eating, we be given sugar at a cheaper rate? It gives you diabetes. You know? So let it be costly. Those who want to eat it can pay money for it. No problem in that. Necessary to live थोड़ी है कि नहीं भाई अगर मैं रिफाइंड चीनी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा. शुगर तो बहुत जगह से मिल जाता है बॉडी को. तुम्हें अपने सुक्रोज और फ्रुक्टोज कंटेंट ही तो पूरे करने हैं ना, वो पूरा कर लो. तो ये हमारी फॉल्ट है. हम अय्याशी की जिंदगी चाहते हैं और सोचते हैं सरकार वो अय्याशी पूरा कर दे, इसीलिए चिल्लाते हैं सब के सब. काम कम करें, पैसा ज़्यादा आ जाए, सेविंग ना हो लेकिन इंटरेस्ट कहीं और से मिल जाए. ये कल्चर अगर हम ठीक कर लें तो हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा. वी हैव टू लुक विद इन एंड चेक हाउ वी आर डूइंग. यस यस, yeah, I believe that we have not performed great. Yeah, true. So he says that when world economy grows at 2%, we are growing at 6.5%. That's a high utility. But what he is not noticing is that Americans in the same time period recorded a growth rate of 2.5%. So if America can grow 2.5% and then India grows 6.5%, how about that? You know, we need to do that comparison. And what is India's potential? What is our natural rate of growth? And given that natural rate of growth, are we meeting it? And if 6.5% is our natural rate of growth, then how come his government is talking about making India a developed economy by 2047? Because by that maths, it will never happen. So you see that see, the chief economic advisor's post today is about who will be the yes man. And then we will reward you with something in IMF also later on, which happened with KV. That they gave him a seat at IMF. That's fair enough. Governments do that. But again, your advisors should not be your sycophants. Your advisors should point out where are you going wrong. Those governments which actually see it that way grow much better. When governments say, no, you are my advisor, but you will keep speaking about what is all right. मैं अभी आज क्लास में पहली चीज आया और क्या बोला, 26 तारीख तक टेस्ट दे दो, नहीं तो मैं टेस्ट 25 तारीख तक, नहीं तो 25 के बाद ये टेस्ट आप नहीं दे सकते. क्यों बोल रहा हूं, क्या जरूरत है? दे दो, लंगर चलता रहे. तुम 5 तारीख को दो, 15 तारीख को दो, तुम्हारा जीवन, मुझे क्या करना है? मैंने तो फीस ले ही ली है. लेकिन मैं क्यों बोलता हूं? Somebody has to put a thing that, look, this is not allowed. You can't do that, or this is where you are going wrong. Unfortunately, the hubris is huge. And unfortunately, it is not only in the government, even in opposition. राहुल गांधी जी के मीटिंग में किसी को पीट दिया जाता है और वो पब्लिक अपॉलॉजी भी नहीं देते. एक पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए कि मेरे सपोर्टर्स ने मार दिया, आई फील सॉरी फॉर इट एट लीस्ट and I apologize. That should come up. Otherwise, how do I feel that if he becomes the prime minister tomorrow, say for a second, and his people will again do the same things about forcing people to accept the line of thought that they want him to accept, he will be good enough to stop them from that. वो तो बोलते हैं मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं, उसमें पिटाई कैसे हो गई किसी की? और फिर मैं बोल रहा हूं कि वो सॉरी भी कैसे नहीं बोले, कम से कम एक सॉरी होता उसके साथ. आप माइक पे गया ये क्या बोल रहे हैं कि मारो मत मारो मत. आप सोच के देखिए, ये वो उस पार्टी के हैं जिसमें सरदार पटेल थे. जब कलकत्ता में राइट्स हुए, सरदार पटेल वेंट एंड स्टूड बिटवीन द राइटर्स, स्टूड, एंड इट्स अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. He stood between the rioters and said that you kill me and go and kill each other. Other than that, there is no way out. मुझे मार दो और चले जाओ. और उनकी इतनी इज्जत थी कि दोनों साइड अपने अपने चले गए पीछे. इनको कैसे कुछ कह सकते हैं? और सरदार पटेल गुजरात के नेता थे वैसे तो, कलकत्ता में आके बात कर रहे थे और सभी चले गए. बोले सरदार आ गए, अब क्या ही बोलना है. ये इज्जत बनाई है तो आप नेता हैं, और ये इज्जत नहीं बनाए तो आप भी एक लेवल के छुटभैया ही हैं, बस थोड़े अपर एंड पे पहुंच गए.
तो फाइन, और मैं सच में आपको बोल रहा हूं, आई डोंट डिमीन, आई एम नॉट मीनिंग डिसरिस्पेक्ट, बट आप जानते ही हैं मैं बोलता ही ऐसे हूं। बट एंड ऑफ द डे जब तक आप नेता अगर हैं तो नेता को लोगों से डर थोड़ी लगता है। मैं टीचर हूं, मैं तुम्हें चेरिश नहीं करूंगा तो स्टूडेंट से डरूंगा थोड़ी। मैं जैसे अभी 5 मिनट लेट हो गया, एक स्टूडेंट थे, उनको मैंने समझाया पहले, 2:38 तक मैं डाउट्स ले रहा था, मेरा कैलकुलेटेड होता है, वहां से यहाँ आने में 6 मिनट्स लगते हैं, तो मैं सोचा था 2:44 तक पहुंच जाऊंगा, बाई 2:47 आई विल बी इन द क्लासरूम। तो 2:38 पे उन्होंने कहा कि नहीं सर, एक डाउट है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। तो मैंने कहा बेटा अभी मेरी क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। सर मैं कल भी आया था, मैं कितनी देर वेट करूं। तो मुझे लगा चलिए ये नाराज हो जाएंगे बेचारे, परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा तुम क्या कर चुके हो बताओ। टुक मी 4-5 मिनट्स, बट मैं उसमें फ्रेट क्यों करूं। ठीक है मैं 5 मिनट तुम्हारे पास लेट से आ जाऊंगा, उसमें अगर हमारा कोर्स खत्म करना है 5 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, तुम्हें क्लास के बाद तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा, अपने घर चला जाऊंगा या अपने काम पे आगे लग जाऊंगा। अगर मैं ये सोचने लगूं तुम क्यों हो अराउंड, मैं तो बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं डाउट्स इसी वक्त में लेता हूं, इसके अलावा नहीं लेता, फिर मैं टीचर नहीं हूं कहीं ना कहीं इंटरनली, मैं कुछ और हूं। मुझे ढूंढना चाहिए मैं क्या हूं, मैं वो बनूं। अ टीचर विल चेरिश द स्टूडेंट्स। आई वुड लव टू बी विथ यू। मैं कल ही अपने वाइफ को बोल रहा था कि मेरा बस चले मैं 22-23 घंटे क्लास ले लूं अगर मेरी बॉडी परमिट करे। आई विल ऑलवेज लव टू बी अमंग माई स्टूडेंट्स। they inspire me, they enthuse me, but I can't do that, of course. My body won't permit and my research won't permit, so I've got to do my research to teach you well also. But this is my limited point to you. तो ऐसे जो पॉलिटिकल क्लास हैं, जो सच में समाज सेवी पॉलिटिशियन है, वो तो लोगों को चेरिश करना चाहिए, लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, उनको को घूमते घामते रहना चाहिए। हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम ठीक हो। अब पुराने जमाने के पॉलिटिशियन का कभी देखिएगा बायोग्राफी उठा के, they would be always on a tour among people. They had no particular security or anything. They were not bothered. तो आप समझिए ये बात, ये बस यहां है कि मैं क्या हूं एक्चुअली। हाँ जब मैं ऑपोजिशन में हूं तब तो अच्छी बात करूंगा ही, जब मैं सरकार में हूं तब मैं अच्छी बात पब्लिकली तो करूंगा ही। तो पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल वर्क। पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। तो अगर इकोनॉमिक एडवाइजर है उनको अपना पोस्ट रखना है ना, and we have the record now. Arvind Subramaniam is on record saying that when I was the chief economic advisor, I had a job to protect the government, so I could not say many things freely which I am not now speaking. So that should not be economic advisor. An economic advisor is a person who is telling the government, look, this is not correct, improve upon it, work out on this. ये नहीं कर पाएंगे आप। तो ये मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ, मैं इंडिया की ग्रोथ में तो खुद ही कहता हूँ वी हैव ग्रोन वेरी वेल, और मैं ये भी मानता हूँ दैट अब इन अ लेस ग्रोइंग वर्ल्ड इट्स अ गुड अचीवमेंट। मैं बस आज इतना कह रहा हूँ, या अभी हमेशा ये बोलता हूँ दैट इफ माई टारगेट कैन बी 8.5 और 9, आई शुड नॉट बी हैप्पी विथ 6.5। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम जस्ट सेइंग दिस दैट 6.5 पे मैं 9 पे मैं जब जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके, इंप्लीमेंट करके उनको, तो थोड़ा खुद को पुश करें तो वहां जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं ठीक है 6.5 इज नॉट अ बैड थिंग टू डू, बट आई शुड नॉट फॉरगेट द टारगेट दैट आई हैव इन माय माइंड। उसमें आपको एक और सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स मिलेंगे बिफोर आई स्टार्ट डिक्टेटिंग थिंग्स टू यू। एक और बात समझिएगा आप, इनफैक्ट इंसिडेंटली कल ही मैं एक सेमिनार में था, वहां मेरी जयती से मुलाकात हो गई, वो यही बात कह रहे थे। तो एक और सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स मिलेंगे, जयती घोष इज वन ऑफ देम, प्रभात पटनायक सर वाज अनदर वन लाइक दैट, जो आपको बोलेंगे ग्रोथ इज नॉट इंपॉर्टेंट। Why do you guys talk about 8% growth, 9% growth? Growth is not important. We should focus on distribution. Distributing what? Poverty. How do you distribute if you don't grow? If India can afford a Manrega today, if India can afford a Saubhagya Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, if India can afford a Vande Bharat, or India can afford a Jal Jeevan mission, it is because we have grown. If we had not grown, we would not have afforded this. तो ये कहना कि ग्रोथ तो कोई बात नहीं, पहले देखो डिस्ट्रीब्यूट क्या करें, ये टिपिकल मैं देखता हूं मेरे जो दोस्त लेफ्ट फ्रंट में रहते हैं, उनको ये बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती है ये थॉट। नहीं डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या है ही नहीं तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे। टोटल इकोनॉमी का जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, 1.4 बिलियन पीपल हैं इकोनॉमी में। आप एक आदमी को मुश्किल से $2,500 दे पाएंगे, $2,500 पर एनम। परचेसिंग पावर पैरिटी पे रखो तो 60,000 रुपया महीना सालाना, तो 5,000 रुपीज पर मंथ पर पर्सन फॉर अ फैमिली ऑफ 4, 20,000 रुपीज पर फैमिली। तो आप कहेंगे हाँ सर सोचिए गरीब के लिए कितना अच्छा होगा जो आज 8-9 हज़ार पे है। तो आप एवरेज की बात कर रहे हैं ना, बराबर करना, और जो आज 50 लाख पे है वो भी तो 20,000 पे आएगा, तब उसका क्या होगा, और इकोनॉमी पे नेट असर क्या पड़ेगा। कर दीजिए सबको बराबर, दिक्कत क्या है।
तो ये आपको मैं समझा रहा हूं that this is outdated thought process now. The new thought process should be empowerment, growth through equity. You know, there is no inimical sense between growth and equity. And hopefully I'll be able to teach you that today itself. But this is what something you should focus on always. तो कुछ लोग मिलेंगे वो भी that growth की कोई ज़रूरी नहीं है. Immediately आप बोलेंगे नहीं growth के बिना resource कहाँ से आएंगे जो redistribute होंगे. If the resources are limited, then people will fight for them. So if you want to redistribute, you will have to keep working on your resource growth. There will be. That is what I'm saying. That for inclusiveness you need growth. जब आप अमीर फैमिली से होते हैं, आप सोच के देखिए, जब आप अमीर फैमिली से होते हैं, comparatively, घर में दो भाई लड़ लिए, two brothers fighting in a rich family, और two sisters or brother and sister for say a meal. अपना एक लड्डू आया, मुझे ज़्यादा दे दो, मुझे ज़्यादा दे दो. पेरेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं? खाओ बहुत है, दोनों को मिल जाएगा. कितना खाओगे? कब बोलते हैं ये? जब उनके पास है. और ना हो तो झगड़ा के ये कह के तो नहीं निपटा सकते फिर. अबे दोनों मत खा, मैं ही खा. बात खत्म. आप समझिए ये बात. जब है तो आपकी लाइफ इजी है. मैं हमेशा आप सबसे ये बात कहता हूं, हर दिन सुबह उठ के थैंक यू बोलिए कि दोनों हाथ दोनों पैर ठीक हैं. जिन लोगों को आप प्यार करते हैं वो आपके सराउंडिंग में है. मैं एक दिन सुबह उठा, मुझे पता चला मेरे मदर नहीं है. बात खत्म. तो बात खत्म हो गई ना फिर तो. उसके पहले तो सोच, ये मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा सुबह उठ के इस बात के लिए थैंक यू बोलिए. आप थैंक यू बोलिए कि मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छी फैमिली में जन्म हो गया तो खा पी सकता हूँ, मुझे क्वाशियोरकर नहीं हुआ, मुझे से रिकेट नहीं हुआ. क्यों नहीं हो सकता था आपको? अगर गरीब फैमिली में जन्म होता जहां खाने को नहीं मिलता तो विटामिन ए की कमी होती, विटामिन डी की कमी होती, के की कमी होती, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है. आपको नहीं हुई, बच गए. हम इसके लिए क्यों नहीं थैंकफुल है? मुझे नहीं समझ आता. वी कैन बी, दीज आर रीजंस इनफ टू बी हैप्पी. मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को पीट नहीं रहे. सोचिए, शुरू हो जाए. आप डर के मारे पढ़ाई लिखाई छोड़ के तपस्या में तो मैं ही जा रहा हूं. सोच के देखिए. दीज आर थिंग्स टू फील लकी अबाउट. That I'm in a happy family, I don't have an illness, I don't have a problem, I have people around me who are happy or who are well to do. समझा रहा हूं कुछ आपको. अमीर लोग जब ये नहीं समझते हैं तब उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है डिप्रेशन ओरिएंटेड. कि तब उनको लगता है क्या कर रहा हूं मैं, हो क्या रहा है मेरे साथ, why should I be happy? You should be happy for this, whatever you have got. And that is what I meant long back when I said spiritual training. Train the spirit and you realize, my God, there's so many things to feel happy about. तो ये जैसे तुम करोगे ना तो वो होता है ग्रोथ विथ इंक्लूजन. क्योंकि अगर मैं अमीर हूं और मैं इस बार इन बातों पे खुश हूं तो कोई मुझे आकर बोलते हैं कि भाई मेरी अगर एक हेल्प हो जाती, आपके पास रिसोर्स है, तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि मैं खुश हूं. हाँ रिसोर्स है, चलो तुम्हें चाहिए, करो, यूज कर लो, देखते हैं, लेट्स हेल्प यू आउट. लेकिन अगर मैं डरा हुआ हूं और मुझे ही लग रहा है कि रिसोर्स की कमी है, तब कोई आकर बोलेंगे यू हैव द रिसोर्स, वुड यू हेल्प मी? नो, हैंग ऑन, आई नीड द रिसोर्स फॉर माई सेल्फ, आई कैन गिव इट टू यू. So understand that. I'm trying to give you an insight into inclusive growth, but inclusive growth has a lot to do about how growth takes place. So never forget that. Okay, let me now make you write the challenges on Manrega, but do keep the debates in mind because we will be using them gradually. You write, first, there are delays in payment of wages. There are delays in payment of wages due to which there is lack of interest by people. Many people did get money under Manrega. Divyanshi, I'm answering your question. Yes, we will be mentioning the unscrupulous practices there, Lipakshi. That is a valid criticism. Correct, Divyanshi.
Untapped rural labor is workers who are not yet working but will work if given a chance. Shubhi, I'm answering your question. And pending arrears means unpaid dues. वो पैसे जो बचे हुए हैं लेकिन दिए नहीं गए उसे unpaid pending arrear बोलते हैं. Sambhavi, I'm answering your question. Okay, let's see this then. अब एक बात समझिएगा, मनरेगा में ये रूल है that you should pay the money within 15 days. All right, but in case of many work, 15 days of completion of work, कि जैसे काम खत्म हुआ, within 15 days the money should be paid. But in many places it has been observed that the money has not been paid up to 2 to 3 months. So that is the delay we are talking about. Second, you write, second point, the amount of funding is lesser than what is needed to make significant difference. What is needed to make significant difference, full stop. According to a World Bank paper, published in 2018, Manrega can become more effective as a social security measure if government spends 1.5% of GDP on it. However, the average expenditure on Manrega has been less than 0.5% of GDP. Then you write next. I hope you got the point that if we want to make a significant impact, then expenditure should rise. If we are spending 1.5 lakh crore or 2 lakh crore in Manrega, that might give us a better result than what it is right now. But we are spending too less, and then the distribution goes weak. Third, you write, there are fake job cards, FAKE wala fake. There are fake job cards. और वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात ये चैंपियन स्टेट्स हैं इसमें, ये तीन फेक जॉब कार्ड्स के मामले में. सरपंच जी के करीब हैं आप तो आपको जॉब कार्ड फट से बन जाएगा. हर जगह होता है, मैं बस चैंपियंस का नाम ले रहा था, मतलब चैलेंजर्स तो बहुत सारे हैं फिर. सो देयर आर पीपल, बट इफ यू आर क्लोज टू सरपंच जी, द कार्ड विल बी मेड, यू विल इमीडिएटली गेट थिंग्स एंड मनी विल बी ट्रांसफर्ड. दैट इज द फेक जॉब कार्ड ट्रांसफर. बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इवन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, यहाँ पे लोगों ने एक और नया तरीका ढूंढ लिया है चोरी करने का. ये क्या करते हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर हैं, दोज हु आर माइग्रेंट वर्कर्स, दे टेक देयर नेम, एड इट ऑन द रोल कॉल, take the money in their name and then distribute it among themselves and with the worker also, of course. Sometimes even the students are brought into that net. स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं तुम्हारा नाम मनरेगा में ऐड करा देते हैं, तुम्हारे अकाउंट में पैसा जाएगा, कुछ तुम रख लेना, कुछ हम रखेंगे. सो ऑल दिस इज, तुम ताक में मत लगना अच्छा सर.
आज आपने समझाया, मैं अपने गांव में पता करता हूँ, इसका कुछ हिसाब किताब हो सकता है क्या? सो ये चोरी मैंने विवाद सर से सीखी. But jokes apart, what I'm trying to tell you here is that this is huge leakage now, and without serving the real beneficiaries. And we don't even know how much is the leakage. We at MIT, we tried estimating it. We took data of around 70 districts, and only in those 70 districts, we were counting it at something like close to a 600 crore rupees that we are looking at. So if I scale it up, I know it's wrong, but if I scale it up over 700 districts, then maybe at least what we are losing is 6,000 crore out of the 1 lakh crore budget of मनरेगा, or close to 1 lakh crore budget of मनरेगा. और ऐसे ही छोटे छोटे चोरियां करते हैं हमारे यहाँ लोग. जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2 लाख करोड़ का बजट है, 5% गायब कर दो. बट जब तुम 5% गायब करते हो, इट्स 10,000 करोड़. मनरेगा से 5% गायब कर दो. तो जब सरकार का बजट बने 40 लाख करोड़ का, और अगर तुमने 5% गायब कर दिया, तो 2 लाख करोड़ रुपए गए किसी किसी जी के पास. मंत्री जी, बाबू साहब, नेताजी, सबके वहां बढ़ गए. ये खतरा होता है when you are not transparent in implementation. So that's a challenge we have had. Okay, you write fake job cards have been, you wrote have been? Yeah, fake job cards have been made, and it has resulted in depriving true beneficiaries. Okay, next, you write you wrote 3 points, right? Yeah, you write fourth. The quality of assets, in many places, is still questionable. All right, that is another challenge, that we are still in many places digging up the pond and filling up the pond. So we're doing that. So we'll have to create more creative work. And one more you write. It is not attached to any training program, or skill development program, which means that it does not add any value in improving workers' capacity, through division of labor and specialization. I hope you could get the language. Division of labor means learning by doing. You do something again and again, and that makes you expert in that. And then you specialize in that. Who had coined this term? Division of labor and specialization? Adam Smith. He was the one who said, once you do something again and again, this is Wealth of Nations, chapter 1, page 1, that where he writes it. That division of labor and specialization is the key to the growth of capitalist world and the factory system. And how workers become specialized and they get more money in return. Okay, then you write way forward.
And you write first, technology should be used along with social auditing, sorry, along with social auditing to assure that corruption can be controlled. Corruption can be controlled. I can believe we understand the idea. Social auditing is the third party auditor will go, group of people, they will ask the villagers if actually they got jobs, how much money was transferred in their account, and try finding out if there are ghost beneficiaries or no work done. And that way we can improve on the performance. Then you write second, it should be linked to Swachh Bharat Yojana or Green India Initiative to assure that quality asset and training of workforce also takes place with social security development for rural labor force. And then one more you write, there should be more empowerment of local government to assure, we mean panchayat here, all right, to assure better delivery mechanism and faster payment of wages. All right. Our second point is PDS, but again, I don't have to make you write much on that. Your notes have the major details. One of you can lend it to me, please. Thank you. You just open up your notes on PDS. और PDS जो है ये आपके GS एग्जाम में भी काफ़ी बार वो लोग पूछते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे. Okay, rather what we can do is I've given you good enough things to again read for this, but let me just synchronize it for you. मैं कोशिश वो कर रहा हूँ क्योंकि नोट्स में क्या है, मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, मैं बस उन फैक्ट्स को पॉइंट वाइज बना रहा हूँ, नथिंग एल्स. चलो लिख ही लो इसको भी. नहीं तो बाद में आप परेशानी में फंसोगे. यू टेक इट अप देन. या करेक्ट गोल्डी, एडम स्मिथ. West Bengal, Madhya Pradesh and Gujarat. Lipakshi, I'm answering your question. Okay, let's see this then. पहले आप कुछ बातें समझ लो. Yes, yes. So yes, so that is the idea that Manrega was introduced as a transitory thing.
It was introduced believing that in the next 10, 15 years, we will industrialize and we will give options to the rural people, and that will mean that Manrega won't be needed. But unfortunately, we introduce something and then we don't work on the next part of it. And that is why we have a situation where we still have to pay Manrega. Only one thing about Manrega is at least you are making people work. No, so that is a suggestion. In fact, the suggestion is that link Manrega work to farm work. So if you can link that, then government can pay for some farm workers, and that will reduce the cost of production and so on. All right. Okay. In PDS, understand few things. Yes, yes. So say think, if you link Swachh Bharat Yojana with Manrega, or you link Green India Initiative with Manrega, so what you do is the structures you are building under Swachh Bharat, or the structures you are building under Green India Initiative, will now be built by Manrega workers. So you are giving them money and you are not duplicating for anything. Like in any case, we are paying to the workers under Swachh Bharat. So why not integrate it with Manrega and get things done under that itself? So we don't have to make duplications then. Reduce urban. One will have to research more on that to check if it has actually happened. But it is intuitively it should. All right. Okay. In PDS, understand this. When I was teaching you agriculture, I had taught you that PDS was created along with FCI and CACP as a distributionary thing, that it will distribute among the people and take things from government to the people. Now, initially, from 1965 till 1997, PDS was operating like this, that people will make a ration card, there will be an office, and people will get a ration card from the government office, and that ration card will be the hallmark which will help them get a designated amount of food and some other elements at cheap rate. That was not free. It was at a cheaper rate, that you will get rice or wheat or millets, even pulses, sugar. So that is why it was called a ration shop. अब अभी भी देखो राशन का मतलब क्या होता है? Ration means to restrict. Or there is rationing. When you say that I'm practicing rationing, so when you are practicing rationing, you are doing what? You are restricting, and you are saying that you will not get what you are wanting entirely, but we will divide it. All right. पर आप देखेंगे हमने उसका हिंदीकरण अलग कर दिया है. हमारे यहाँ लोग ग्रोसरी को राशन बोलने लगे हैं. मैं राशन लेने जा रहा हूँ. तुम राशन लेने नहीं, सामान लेने जा रहे हो, वो ग्रोसरी है. बट ये यूज में आ गया, बिकॉज पीपल यूज टू गो टू राशन शॉप एंड दे वुड बाय थिंग्स फ्रॉम देयर. सो एक टर्म बन गया, मैं राशन लेने जा रहा हूँ वहाँ पे. राशन शॉप है तो वहाँ राशन मिलता है. तो ऐसे कुछ बात बन गई. तो इस तरह के आप देखेंगे बोलचाल में बात आ गई. बट राशन का मतलब is restriction, that everybody will not get the entire amount because everybody has to get some amount. I have a shortage, and since I have a shortage, I will ration everything and you will get your determined amount. So ration cards were given to people, and then you were allowed to get up to say 2 kg of sugar or 5 kg of wheat, etc. from those ration shop. And there was no distinction between above poverty line, below poverty line. Everybody qualified to get money from get things from the ration shop at a cheaper rate. But it was observed that there is a lot of leakage. There are deliberate shortages created. Black marketing is very, very huge. The rich people also are taking advantage of cheaper commodities. Also remember, between 1965, you have studied the poverty estimate. Between 1965 and 1997, India's poverty structure changed. Earlier, we had more than 60% people in poverty, or 50% people in poverty. Another 20-25% were also very poor. So making it almost universal was okay. तो okay, सभी लोगों को राशन मिल जाने दो, क्योंकि in any case बहुत सारे लोग गरीब हैं. But gradually this thing started changing. So by the time we reached 1997, India's poverty ratio had come down to 34% in spite of Lakdawala committee report. So now we did not have that acute poverty that everybody should be given this. So the government introduced a system called targeted public distribution system. तो क्या किया सरकार ने इसमें? Government said we will have above poverty line people, we will have below poverty line people.
The above poverty line people will have to pay in the ration shop, will have to pay money equal to MSP, कि जो सरकार MSP देते हैं वो आप यहाँ दीजिए अगर आप above poverty line है. आपके ऊपर स्टोरेज का खर्चा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, MSP का खर्चा है, ऑलराइट, वो आपको देना पड़ेगा. And the below poverty line people had to give 50% of MSP. Above poverty line people, you give equal to MSP. Below poverty line people, you give 50% of MSP. This was targeted PDS or targeted public distribution system. This was introduced in 97, majorly notified in 98, the NDA government, Vajpayee ji, they were the ones who were pushing it. In 2000, they introduced one more criteria. They said that those who are very poor and very worse off, they will be counted as Antyodaya and they will be given 7 kg of food per month free of cost. Alright, तो जो बहुत गरीब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा deprived हैं, उनको free food मिल जाएगा 7 kg per month free of cost. Alright, that was the Antyodaya Yojana in 2000 introduced. Okay, this is how the system went on till 2012. In 2013, and again 10, 11, 12, अब उस वक्त बीजेपी बड़े परेशान थे बेचारे, 10 साल से पावर से बाहर थे, तो तरह तरह की बात बोलते थे. तो उसमें में एक बात शुरू हुई, गरीबों को खाना क्यों नहीं मिल रहा, गरीब को खाना मिलना चाहिए. तो वो डिबेट शुरू हुई 2010, 2011, 2012, एंड वी पास्ड इन 2013 द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. अब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या था? इट सेड दैट वी गारंटी फूड सिक्योरिटी to all the beneficiaries. Now how do we identify the beneficiaries? तो उसके लिए किया गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, और उस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में 7 डिप्राइवेशन थिंग्स डिफाइन किए गए थे. मैं आपको जान के उधर नहीं ले जा रहा बिकॉज इट्स टू आउटडेटेड नाउ, पर आपको हिंट दे सकता हूँ. लाइक D1, D2, D3 करके D7, 7 डिप्राइवेशन. लाइक फैमिलीज विदाउट an earning male member, families with only old age members in it, families which do not have access to basic amenities. इस तरह से करके 7 deprivation बनाए गए थे और कहा गया कि अगर आपकी फैमिली इन 7 deprivation में है तो आपको deprived माना जाएगा, आपको poverty में माना जाएगा. I hope you are getting me on that. That was conducted under socio-economic caste census. This was 2011. In 2013, we passed the National Food Security Act, and we say that 75% of rural population deprived under SECC, socio-economic caste census, and 50% of urban population deprived under SECC will be considered as beneficiaries under National Food Security Act. This was huge, and this was unnecessary even then, and this was populist. शायद अगले साल इलेक्शन था तो सरकार सोच रहे थे हम ज़्यादा लोगों को खुश कर लें, मुझे नहीं पता, ऑपोजिशन भी सोच रहे थे इसको कैसे मना करें. दिस वाज नॉट कंसोलिडेटिंग द फिस्क. आपको बताता हूँ मैं क्यों ये कह रहा हूँ. इवन इन 2013 दिस वाज कवरिंग ऑलमोस्ट 67% ऑफ द पॉपुलेशन. वी वर हैविंग अराउंड 800 मिलियन पीपल, 80 करोड़ लोग जो इस बेनिफिट के अंदर आ गए. अब आप सोचिए, इंडिया में 80 करोड़ लोग इतने गरीब नहीं थे उस वक्त भी. इवन इन दोज डेज 80 करोड़ पीपल वर नॉट दैट पुअर दैट वी वर सेइंग दैट यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 5 kg ऑफ फूड, व्हीट, राइस और मिलेट एट 2 rupees, 3 rupees और 1 rupee पर kg रिस्पेक्टिवली. क्या आपको व्हीट खरीदना है 2 rupees पर kg, मिलेट 1 rupee and rice 3 rupees per kg. People were not that poor, but again, as I said, populism worked, and 800 million people came into that. उसमें एक और बात समझना. In 2013, when we fixed 3 rupees per kg for rice or 2 rupees per kg for wheat, the MSP for rice was 12 rupees per kg. The MSP for wheat was 10 rupees per kg. तो हम कह रहे थे ठीक है, आप MSP का 75% हम लोग दे देते हैं और 25% आप लोग दे दो. कुछ ऐसे फिक्स हो रहा था. That government will pay 75% of MSP, people pay 25% of MSP, those who are the beneficiaries under NFSA, National Food Security Act. ठीक है. Then it went on till 2020. Then in 2020 we had the COVID pandemic. So during COVID pandemic, the government announced a scheme called Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, PMGKAY. All right, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. तो इस स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला that अच्छा,
आपको मैं कुछ और बातें बताऊंगा अभी एनएफएसए पे, पहले आप ये समझ लो, स्टोरी पूरी कर लो फिर एनएफएसए बता दूंगा। तो स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दैट यू विल गेट योर एंटाइटल्ड 5 kg ऑफ फूड at 3 rupees, 2 rupees and 1 rupee per kg, rice, wheat and millets. Apart from that, we allow you to take another 5 kg of food free of cost. Again, rice, wheat or millet. तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पहले क्या रूल था? उसके पहले ये रूल था that any household is entitled to purchase up to 5 kg of food per adult in the household at 3 rupees per kg for rice, 2 for wheat and 1 for millet. But after this yojana we were saying that now you can purchase your 3 rupees, 2 rupee, 1 rupee per kg plus another 5 kg you can take free of cost from the PDS. You clear on that? एक तरह से अब हम परिवार को कह रहे थे कि आप 10 kg फूड के लिए entitled हैं, 10 kg, 5 kg free of cost and 5 kg at the price to be paid in the market. I am not resisting that at the moment because 2020 was a bad year. Everybody was in distress. We didn't even know what we are hit by. What is the disease? Who will survive? There was complete lockdown. So, okay, giving people 10 kg food, understandable, keeping them secure. 2021, the Delta variant affected us. The scheme continued. 2022, ideally the scheme should have been folded back. And we should have gone back to NFSA, 1 rupee, 2 rupees, 3 rupees. But we are us. तो हम लोग सरकार जानते थे कि जैसे ही मैं स्कीम को फोल्ड बैक करूंगा, लोग ये बात बताएंगे ही नहीं कि ये स्कीम सिर्फ कोविड में आई थी और अब कोविड चला गया तो ये स्कीम भी चली जानी चाहिए. कोविड गोज द स्कीम शुड गो. हम लोग रैशनैलिटी से तो ऐसे बात नहीं करते. तो हम लोग, सरकार ने क्या किया, पहले तो गुजरात इलेक्शंस आने वाले थे तो सरकार ने बोला ये अभी और चलेगा 7-8 months. उनकी खूब क्रिटिसिज्म भी हुई जो कि वैलिड क्रिटिसिज्म थी. इट वाज नॉट नीडेड दिस काइंड ऑफ अ स्कीम बट बिकॉज ऑफ गुजरात इलेक्शंस दे डिडंट डिस्टर्ब इट. 2022 December, Gujarat elections gone. 2022 December end, government announces on 26 December that now from 1st January 2023, people will be entitled to get not 10 kg of food, but 5 kg of food, but now they will not have to pay anything, 1 rupee, 2 rupee or 3 rupee. All this 5 kg of food will be for free. ये अनएजुकेटेड हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए. और दुख की बात ये थी कि कुछ काफ़ी पढ़े लिखे लोग, कुछ मेरे काफ़ी अजीज़ लोग भी, जैसे डॉक्टर जॉन ड्रीज, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे. कि उन्होंने कहा, रादर क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्यों आपने 5 kg फूड हटा लिया वापस, 10 kg की ज़रूरत है पुअर्स को. The poors were not using 10 kg because you don't eat 20 kg food in a month as any family household. They were selling it in the market and making money out of that. And the real money was made actually by the traders who would buy it from the poors at 4 rupees, 3 rupees, 5 rupees per kg and then sell it in the open market at 25-30 rupees a kg. तो ये wastage of money. अब आप सोच के देखिए, National Food Security Act comes in 2013. By 2023, is India poorer or richer? The answer is richer. Okay. Are the poors in India poorer or richer? Well, the answer is richer because of everything we see, the MDPI numbers, or even the numbers as we see in World Bank poverty numbers. Now we don't have the new SECC, the new socio-economic caste census has not been done, which means the beneficiaries will remain same as those who were there in the previous SECC. अभी भी 80 करोड़ लोगों को ये मिलेगा. आप सोच के देखिए, the cost of food production has gone up, MSP has gone up. Today we are giving 22 rupees per kg MSP on wheat and 24-25 rupees on rice, and now we are making it free. ये unnecessary है. इसीलिए हमारा बजट जो है वो 2 लाख करोड़ पहुंच गया है फूड सब्सिडी का. ये 80,000-90,000 करोड़ होता था. 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं हम. साथ हमें अगर आप सलाह दें, या जो मैं बोल रहा हूं कि आपको सलाह देना चाहिए, आइडियली हम क्या कर सकते हैं? Make it 6 rupees per kg rice, because when MSP was 12 rupees per kg, we were charging 3 rupees per kg. At least proportionate increase. If MSP is 24 rupees per kg, pay 6 rupees per kg rice. Make it 5 rupees per kg wheat, and make it free of cost millet. हमें गरीब का पेट भरने से मतलब है ना.
चावल ही खिला के क्यों पेट भरना है? मिलेट दे दीजिए फ्री, बोले फ्री मिलेट है आपके लिए, जितना मिलेट आप ऑफ टेक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है. वी ग्रो 50 million tons of millet in India. Even after considering for self consumption and trading, we still have 25 million tons surplus. फायदा क्या होगा? APMC will buy more millets, people will use more millets, and that will promote. हम पिछले साल हमने डिक्लेयर किया था ना ईयर ऑफ मिलेट्स, हमने उसका नाम भी दिया श्री अन्न. तो श्री अन्न का बढ़ावा तो तभी मिलेगा जब लोग खाएं, लेकिन लोग तो तब खाएंगे जब बाकी के ऑप्शंस कम किए जाएं. अगर आप कहेंगे आपको फ्री वीट है, फ्री राइस है और फ्री मिलेट भी है, क्या लोगे? तो कोई थोड़ी कहेगा मैं मिलेट लूंगा. हम अजीब अजीब हरकत उसमें करते हैं. वी विल प्रमोट मिलेट बाय डेवलपिंग न्यूट्री बार्स विथ चॉकलेट कोटेड विथ मिलेट. God knows what kind of people think and make such things. You know, how much millet can you use by that method? But imagine if you can make millet the chosen crop from PDS, then how much millet can we use? So the idea should be that you know, make a better usage of things without keeping your poors you know, without food. Rather, millet will be a more nutritious food, and millet is a less water guzzling food. So all that helps the poor as much. In fact, हमने कल्चर बदला है. अगर आप जाएंगे राजस्थान में जाते या तमिलनाडु में जाते, या आप से if you go even to Bihar or if you go to Jharkhand, eating millet has been a normal part of culture. You know, people eat their millet. बाजरे की रोटी बना के खाना या जौ की रोटी, ये सब नॉर्मल लोग खाते थे भाई. ऐसा नहीं इसको, मतलब बचपन में मैंने खाया हुआ है, किसी गरीब घर में नहीं था. ये पार्ट ऑफ कल्चर था कि कल्चरली ऐसे ही बनेगा खाना, घर में आप खाइए, सब लोग खाते थे. यू नो, तो ये आपको समझा रहा हूं, ये कल्चर हमने बदल दिया, चीप राइस चीप वीट दे देकर लोगों को. तो ये अगर हम बदलना चाहते हैं वापस, तो इसकी शुरुआत ये होनी चाहिए दैट वी विल गिव यू मिलेट फॉर फ्री एंड बट वी विल चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर वीट एंड राइस. दैट वे द बेनिफिशियरीज आर नॉट डिप्राइव्ड, दे कैन स्टिल टेक देयर मिलेट. दैट वेज वी विल बी एबल टू सेव at least 60,000 crore rupees. I've done this back of the hand calculation. Right now you just take my words on it. वरना मैं बोर्ड पे करके दिखा सकता हूँ, बट वो टाइम लगा देगा हमारा. तो अभी के लिए आप मान लीजिए कि करीब 60,000 करोड़ रुपए बच सकते हैं. What can we do with the 60,000 crore rupees? The bottom 50% or 40% of population can be given pulses, with government procuring pulses from at MSP and giving it to these people. Pulse production will get a fillip. ज़्यादा लोग pulse produce करेंगे फिर. Pulse consumption will increase because pulses are a great source of protein for rural poor. Do that. You know, rather than saying that नहीं मैं wheat और rice डालता जाऊंगा आपके मुंह में, खाते जाओ, बेच भी दो, कुछ भी कर लो. You know, this is what we need to be thinking on. अगर ये कर लें तो PDS better work कर सकता है. मेरे हिसाब से it's a very bad policy to keep food free for in India for 800 million people. Much better things can be done with that. Much better things. I mean, okay, some people give an argument, मैं भी आपको लिखवाऊंगा, that if you give food for free, then people can buy other things. No doubt, people can buy other things if they get food for free. But that is the idea, no? That who are the people we are helping? And do they actually need free food to buy other things, or would they have bought other things anyways? So this is what we need to discuss and debate. That is the idea. Now, there are a few more things on NFSA you should know. NFSA was brought in as a life cycle method. Now, what is this life cycle method? It was said that the support for food and nutrition will begin immediately after your birth with Pradhan Mantri Matri Sahyog Yojana. It's different names in different states. Some places it is called Matru Vandana Yojana, some places it's called Matritva Sahyog Yojana. So different names हैं, but purpose एक ही है that a newly born child and the mother will get 6,000 rupees over 6 months for their nutrition. So this is one thing. So as you are born, the support begins. Then there will be ICDS, Integrated Child Development Scheme, along with Midday Meal Scheme. अब सरकार ने इनको मिला दिया है और इसका नाम रखा है पोषण 2.0. All right. So under that पोषण 2.0, there will be nutrition given to children preschool, and there will be nutrition given to children in school. So you get nutritioned in school, and once you come out of school, say at the age of 18 odd, then you are entitled, every person above the age of 18 in India is entitled to get food up to 5 kg, free of cost, as I told you, wheat, rice or millet, any of the three. If you are above 60 years, that is in the old age, then you automatically qualify for Antyodaya, under which you will get 7 kg of food
free of cost from the government. This is for people above 60 years of age. All right, so this is the story of NFSA. NFSA में एक और बात है, if there is a situation of war or if there is an earthquake, then NFSA will stand suspended. It's quite counterintuitive. Ideally, people need more food in a war or in an earthquake, but NFSA ने बोला कि अगर war हो गया या earthquake आ गया, तो force majeure clause बोलते हैं, beyond our God's act, beyond our capacity, and hence the act will remain suspended. Then the government will not be liable to give free food to people. So this is on NFSA that we need to know across. Now when I'll make you write it, we will write it as PDS, benefits of PDS after TPDS, challenges of PDS, NFSA, and what can be the way forward. जो आप NFSA में लिखेंगे वो अगर आपसे कोई पूछते हैं benefit और challenges of NFSA बताओ, वो वही है जो PDS का है, क्योंकि NFSA PDS के थ्रू ही दिया जाता है. I hope I have made myself clear to you that benefits and challenges of NFSA are same as that of PDS, because whatever money is given through in PDS is through NFSA. Everyone with me on that? Let's put it down then. You write. PDS has been introduced in India. PDS has been introduced in India since 1965-66. With the objective of providing food security for all. Food security for all. The government set up PDS shops, public distribution system shops. In a bracket you write, through state government initiative. Through state government initiative. Close the bracket. So remember, यहाँ भी एक challenge आता है. जो state government ज़्यादा काम किए, like Tamil Nadu under MGR, especially Jayalalitha ji, they were very active in developing PDS in 70s and early 80s. Because Jayalalitha ji was made the food minister by MGR, and she started programming midday meal scheme is what Tamil Nadu started. Kerala, another state where PDS worked very well because the state government took active interest in establishing PDS. West Bengal during communist rule was another state where PDS was activated very well. Himachal Pradesh was another state where it did well. Gujarat is another place where it did well. All right, so there were several states which were establishing PDS and the public distribution shops to assure that there is good money, a good procurement. क्योंकि ultimately क्या चक्कर था? आप याद करिए जो मैंने agriculture में सिखाया था. The APMC will procure from the farmers, give it to FCI. तो जो state FCI के गोडाउन ज़्यादा बना पाए और वहाँ procurement ज़्यादा कर पाए, वो state PDS में भी supply ज़्यादा कर पाए. You understand that? So some states took proactive measures. Some other states did not. Bihar did not do it. In those days, Bihar and Jharkhand were together, so they did not happen there. Assam did not do it much, or for that matter, the entire Northeast, or the states like Orissa or Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has later on caught up. पिछले 15-20 साल में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे वर्क हुआ और PDS शॉप्स बने और ये चीज़ें डेवलप हुई. तो आज हम नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश उस स्टेट के कैटेगरी में होगा, बट 1970 में था when the PDS was not majorly popular in these states. तो देखो एक पैराडॉक्स सिखाना चाह रहा था तुम्हें. The Bimaru states of India, this name was coined by Professor K.N. Raj, So the Bimaru states of India, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, later on it became Bimaru O. Orissa was added to that. All right. So the comparatively lagging behind states of India, I'm talking 80s की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, but 80s की अगर बात करें,
So these states of India, which should have ideally developed more PDS shops and more centers, because they had maximum number of poors, were not doing it. And the relatively richer and better off states of India, like a Tamil Nadu or a Kerala or a Punjab or Gujarat, they were doing it much better. So this was again quite paradoxical when it comes to the PDS system development in India. तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दोष है, और जो उस समय के स्टेट लीडर्स थे उनका बहुत दोष है. that is very important to understand that they were. एक और बात भी थी उस समय जो धीरे धीरे बीमारी में बीजेपी में भी घुसते देख रहा हूँ, हाई कमांड कल्चर. अब मैं आपको बिहार का एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे मेरी बात. 1981 to 1983, Jagannath Mishra ji is the chief minister of Bihar. 83 to 84, Bindeshwari Dubey ji is the chief minister of Bihar. 84 to 86, there is S.N. Singh who is the chief minister of Bihar. Again, Jagannath Mishra ji is the chief minister of Bihar. Then Bhagwat Jha ji is the chief minister of Bihar. And then again Bindeshwari Dubey ji is the chief minister of Bihar. तो नीतीश कुमार अकेले ही नहीं है जो बिहार का चीफ मिनिस्टर का ओथ 9-10 बार ले लिए. बस उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि वो सेम पर्सन बार बार ओथ लिए. नहीं तो बिहार में चीफ मिनिस्टर्स का बार बार ओथ लेना बड़ा नॉर्मल सिस्टम रहा. वो बस लालू जी के समय था कि या तो लालू जी या राबड़ी जी, बस ये दो लोग ओथ लेते थे. बाकी लोग ने नहीं लिया ओथ. लेकिन कांग्रेस की सरकार जब 80s में चल रही थी बिहार में, तो 10 बार चीफ मिनिस्टर बदले गए विद इन अ डिकेड. यही हरकत उत्तर प्रदेश में होती थी. 8 चीफ मिनिस्टर्स बदले गए विद इन अ डिकेड. तो ये जो हाई कमांड कल्चर आता है वो क्या करता है, इफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट श्योर अबाउट बीइंग देयर, तो वो लॉन्ग टर्म पीडीएस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहां शुरू करेंगे. इट्स लाइक यू आस्किंग योर एडहॉक टीचर्स इन द कॉलेज, सर व्हाट विल वी स्टडी नेक्स्ट सेमेस्टर. पुअर गाइज, उनको लगता है नेक्स्ट सेमेस्टर का नाम मत लो, मुझे भी रिन्यूअल कराना है. डराओ मत. तो ऐसे ही अगर आपको पता ही नहीं कि आप 5 साल रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, तो ही आप घात खतरे में हैं. तो ये गड़बड़ी थी जरूर 80s में बहुत ज्यादा, दैट द चीफ मिनिस्टर्स वुड बी चेंज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली. और इंदिरा गांधी जी एक और बात में थी, राजीव गांधी जी ने भी इसको फॉलो किया. अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर बदल देते थे और दूसरी पार्टी की सरकार को डिसमिस कर देते थे. एसआर बोम्बई केस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 1994, वहां यह तय हुआ कि आप 356 नहीं लगा सकते जब मर्जी हो. उसके पहले हैबिट थी, जब मर्जी 356 लगाते थे. So this was a challenge that we were having. All right. In fact, the Supreme Court made a very good observation. Dr. Ambedkar had said during introduction of 356 that it is a dead article, but you have made it a deadly article. And you are using it to target your opposition governments. So this became the case actually that state governments were not allowed to remain stable in many cases, and that hurt our social sector quite a bit. कल मैं आपसे इसीलिए यही था मेरे दिमाग में, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो सोशल सेक्टर है वो तो स्टेट के हाथ में है. एजुकेशन, हेल्थ केयर, पुलिसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ तो स्टेट, वाटर सप्लाई, तो स्टेट, राज्य सरकार अगर ठीक नहीं होंगे तो केंद्र सरकार जितना मर्जी कुछ कर ले, ये सुविधाएं तो लोगों तक नहीं पहुंचेंगी. So if we want to actually make these benefits reach people, the state governments have to be very active. And you will see Kerala had a nice communist government, and EMS Namudripad and thereafter. And what did that communist government do? Understand that. I wish my wife could have heard me saying this. But what did that communist government do? They changed the whole culture of work in Kerala, where they made human resource development and focusing on humans a central theme, which meant that even the Congress, when it came to power, had to talk about it. They could not talk anything else. So it became a central theme. The only challenge in Kerala model is they could not create jobs, because they could not create industries. Understand that. Tamil Nadu did one step better. Tamil Nadu created jobs, created industry, and focused on social security. That is what it could do. And again, what did it do? Two major parties, DMK and later on AIDMK. AIDMK was a byproduct of DMK only when MGR decided to switch, to change his system. But whether it was MGR or whether it was Karunanidhi ji, the understanding was clear that we will focus on industrialization of state without compromising the human resource. So whether it was rural area development, I mean, if you go to villages in Tamil Nadu and see the level of literacy, it's much different from what you see in many villages other places.
But that doesn't come automatically, doesn't that? It is not that I mean the kid is born और जन्म होते ही बोलता है I need literacy. No, you need to create enough resources to make sure the kid is in school, and the kid is given food, and the kid gets literacy. Then you create an adult who is capable. So state governments have played a major role in that, in doing it. Last 25 years, some other states have done well, like Gujarat has done well. Madhya Pradesh to some extent has done well, some extent, not entirely. Education is a big challenge, but otherwise it has been able to do well. Gujarat has been able to do pretty well in the last 25, 30 years especially, with respect to human resource. तो ये बाकी स्टेट्स को सीखने की जरूरत है, बस इसलिए आपको इतना लेक्चर दे रहा था कि आप फेडरलिज्म पे सवाल अगर आता है तो आप उसको ऐसे करेंगे दैट वन स्टेट कैन लर्न व्हाट डिड द अदर स्टेट डू बेटर. कर्नाटका लर्नड फ्रॉम तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश लर्नड फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला. दैट इज हाउ दे डेवलप्ड. Andhra Pradesh and Karnataka were not having such great social indicators till 90s. But then Chandrababu Naidu in Andhra Pradesh, before him of course N.T. Rama Rao, but Chandrababu Naidu in Andhra Pradesh, and later on, people like S.R. Bommai and all in Karnataka, and they started giving some good growth with respect to, and of course, they got lucky in one more sense. Lucky in this is not a right word again. Policy oriented it was. They made policy out of the box and looked forward and invited IT into their states. So Bengaluru became an IT hub. I'm missing the chief minister's name. I'm so sorry. But he was the one who actually invited IT and brought it to Bengaluru. There was a Congress chief minister in those days. And after Bengaluru became an IT hub, when Chandrababu Naidu became the chief minister of Andhra Pradesh, he understood that, look, this is the way Bengaluru has grown. So he developed Hyderabad on the same model. Cyberabad and all as they were created. That is, they said, look, let me develop this on the same model so that we can attract more and more talent here. So this is something which led to the growth. यही बात सारे states को सीखनी है कि मैं अपने comparative advantage को देखूं. I see my comparative advantage, but most importantly, I invest in my people. If I make stronger people, I will definitely have, stronger results. So this is the key factor. और हमारे आपके जैसे लोग जो पढ़े लिखे हो गए थोड़ा, हमारे लिए एक बहुत डरने की बात है. हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग पढ़े लिखे हो जाए, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाए, नहीं तो हम एक ब्रूट माइनॉरिटी में रह जाएंगे और वो बहुत खतरनाक है क्योंकि हमारी बात ही कोई नहीं समझ रहे होंगे. आप ये दिक्कत अभी फेस करना शुरू कर दिए होंगे अपनी यूपीएससी की 1 साल की तैयारी में. That since you are preparing for UPSC for 1 year, it might happen many times that there is a debate or a discussion happening in a family and you say something where everybody looks at you as if you are talking something alien. कि सब आपको ऐसे ही देखेंगे कि क्या एक ऐसी अजीब सी बात की तुमने, ये क्या मतलब होता है? क्योंकि अब आप थोड़ा ज़्यादा जान गए तो आप उनको बोलते हो, कोई बात वो कहेंगे ये चीज़ नहीं हुआ, कोई कह रहे नहीं ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, ऐसे बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी. क्या बक रहा है ये? कौन बलवंत राय मेहता, कौन अशोक मेहता, कैसा पंचायती राज? कुछ नहीं होता ये सब, प्रधानमंत्री जी को आके झाड़ू दे देना चाहिए. ये आपको समझा रहा हूं that it becomes a trouble part. So it's important that you push education and develop things. जब भी कोई कहते हैं ना तेजस्वी यादव जी is only 9th pass or 9th fail, whatever it is, and how will he run Bihar? Well, people in Bihar, a lot of people won't mind it because Bihar's literacy rate is only 58%. तो 42% लोग तो क्लास 1 भी नहीं देखे, तो 9th वाला तो पढ़ा लिखा हो गया ना उनके लिए. तो उनके लिए तो पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है हमारा, हमसे ज्यादा जानता है. आप ये समझिए, जितना मर्जी आप बोल दें कि नहीं भाई इनसे कैसे सरकार चलेगी, ये तो अभी 9th पास नहीं कर पाए ठीक से, ऊपर से ग्रास रूट के नेता भी नहीं है. और तेजस्वी यादव जी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, उनके लिए मुझे फिर मिक्स्ड फीलिंग होती है. मैं हमेशा बोलता हूँ, एक फीलिंग ये होती है कि चीफ मिनिस्टर के सन थे तो भी 10th पास नहीं कर पाए. इतने इनएफिशिएंट कैसे हुए? क्योंकि ट्यूशन लगा के सब करके 10th तो पास. 10th is such an exam. And my younger son is going through 10th. I told him, I said, if you study very hard for this, I will be feeling so bad about it. Conserve your energy for better things in future. Enjoy करो एग्जाम को, दे दो, नंबर आ जाएंगे, वो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा. बट उसके ऊपर उसका कोई खास तुम्हें फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है. So I told him that he is going through his 10th board exam. But I have another feeling for him कि चीफ मिनिस्टर के बेटे थे, बिहार जैसे स्टेट में थे, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया. तो मुझे डुअल फीलिंग होती है उनके लिए
you know, that he is so inefficient he couldn't pass his 10th standard. But maybe he is honest enough not to make a certificate which is wrong certificate and claim that look I passed my 10th standard and all. He didn't do that. बोले अरे बिल्कुल मैं 9th भी पास नहीं किया, तुम्हें जो सोचना है सोचो मेरे बारे में, मैं ईमानदार हूँ लेकिन इस बात को लेके चलो good. Otherwise I think 90 out of 100 people if they were in his place they would have surely arranged a certificate for themselves. Then later on you may or may not have found that certificate, you know. But anyways, now see when you look at things per se, but मैं politics की बात आपसे इसलिए करता हूँ because end of the day these are all topics, poverty or inequality, this is a lot political in nature. आप देखेंगे जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई वहाँ पे एक different discourse set हो गया. Except for West Bengal. West Bengal, it went for a bad toss. Initially, Jyoti Basuji's days were good, but later on it started becoming a more syndicate-oriented and you know, it became a different story altogether. But Kerala, they could do well. Even in West Bengal, you would see at least talking about, like Mamata Banerjee ji has also done it, that she says that if you send your children to school, we'll give them money. But they will get the money only after 10th standard, and then they will get the money in their pocket only after 12th standard. So that makes sure that everybody tries sending children to school for 12th till 12th standard. So the child labor part kind of goes away. But it was initiated by Jyoti Basuji way back in 1995. Then it was discontinued later on, but then continued again by Mamata Banerjee ji. तो एक discourse बनता है इससे स्टेट में कि आप किस तरह से अपना राज्य चलाएंगे, क्या बेनिफिट देंगे गरीबों को, क्या नहीं देंगे, uplift कैसे करेंगे. So if you develop that discourse, that's actually a very good idea. Similarly, in West Bengal, in every school, they have a system. Actually, that's again cultural in nature, that there will be extracurricular like music, poetry, etc. taught. So you will see the kids who may not be, everybody cannot be an engineer, and everybody will not be a doctor. So some of them can actually go into social sector sphere. Some of them can go into our, field of humanities and do well for themselves. I was very impressed because when I saw West Bengal for the first time, every house had people who were trained in some musical instrument or some music. I mean, that was amazing. क्योंकि मैंने वो देखा नहीं था उसके पहले कभी. तो कुछ ना कुछ या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आता था या म्यूजिक आता था या गाना आता था. ये मुझे लगा ये आपके माइंड को ट्रेन करता है टू गेट डेवलप्ड इन द ह्यूमन मैकेनिज्म. किसी को पोइट्री लिखना आएगा, पोइट्री पे चर्चा हो रही है, तो मुझे बड़ा, इसलिए भी मैं बड़ा जल कर गया क्योंकि मैं भी ये बहुत करता था. आई रीड अ लॉट ऑफ पोइट्री. राइट भी, बट छोड़ो, वो एक अलग बात है, बट द पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इज ह्यूमन सिस्टम ग्रोथ. That okay, you are busy in your work and you are doing your engineering and you are doing your economics and you are doing your history, but then if you do some art, that gives you some solace. It's stress buster. Then doing some art, you're liking it, you're listening to something or you're liking something, doing a good debate. तो ये कल्चरल है, ये मैं बता रहा हूँ. ये अगर बनाते जाएंगे अगर, तो आपका सिस्टम बेटर डेवलप होता जाता है. इसी को मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलता हूँ. अपने आंसर्स में इसको जरूर ठूसोगे क्योंकि ये न्यू थिंग है जो इंडिया को बार बार सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं. फोकस ऑन योर ह्यूमंस एंड देन यू गेट योर डेमोग्राफिक डिविडेंड. इफ यू डोंट फोकस ऑन योर ह्यूमंस, द डेमोग्राफिक डिविडेंड eludes you. All right. Okay, now I'm giving you the further write-up. Could you tell me the thing you wrote? Yeah, with state governments. And after, close the bracket and then write. And it resulted in distribution of food, clothes and other essentials other essentials like sugar, other essentials like stationery, these things were also sold through these shops. All right, so other essentials sold through these shops. Full stop. The beneficiaries were identified through a ration card
through a ration card issued by Ministry of Social Welfare. In those days it was social welfare, now they call it social justice. Ministry of Social Welfare. Full stop. It continued till 1997. It continued till 1997. Full stop. In 1997, government introduced targeted public distribution system. You can write targeted PDS, and in a bracket you can write TPDS. Targeted PDS, and in a bracket you write TPDS. So targeted public distribution system, targeted PDS, under which the beneficiaries were divided into above poverty line, in a bracket you write APL, close the bracket, who had to pay 50%, 50% of, don't write 50%, you write who had to pay the entire MSP, and they could purchase up to 5 kg of food per adult per month, and below poverty line who had to pay 50% of MSP, 50% of MSP to purchase 5 kg of food per adult per month. 5 kg of food per adult per month. So 50% of MSP to be paid by BPL and entire MSP to be paid by APL. In the same thing you write, in the year 2000, government introduced Antyoday scheme, ANTYODAY, Antyoday. Government introduced Antyoday scheme, ANTYODAY, Antyoday scheme, in which it allowed very poor families in severe poverty to take up to 35 kg of food, mind you, I'm talking family, they assumed it as 5 people, 7 kg per person. All right? आप मत सोचिएगा कि अभी 7 बोल रहा था, अभी 35 बढ़ा रहा है. नहीं, मैं बस into 5 कर रहा हूँ for the family. So 35 kg of food, because that was the scheme actually, it was 35 kg of food per month, free of cost. Change the paragraph. You write
benefits of PDS आ जगह नहीं, 8 होंगे तो भी 35 ही kg मिलेगा। हाँ, ज्यादा हो गए ना, कुछ 8 हो गए तो मतलब 6 लोग भी हो गए तो भी 35 ही मिलेगा, वो चीज़ थी। तो 5 के लिए 35 मिल रहा था, हम दो हमारे 3 से ज़्यादा किया तो थोड़ा फिर रुकना है लोगों को कि आप इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़ाएं। ओके, you take this, then in fact again remember there we'll discuss population at an opportune time. Again I keep it as a question, demography in my test series. But population, again remember, look at it always as asset as well as a cost. So if my population is educated, healthy, and can get work, then it's an asset for me. Chinese are struggling today because their population growth has gone down tremendously. So they're not getting anybody to buy things. But they have a lot of things that they can produce. So population is that asset. But you have to make it a purchasing capacity population. अगर आपके population के बाद खरीदने की ताकत है तो वो एक asset है। अब खरीदने की ताकत कैसे होगी? How will the population get purchasing capacity? The population gets purchasing capacity when they are employed. How do you make the population employed? By educating them, keeping them healthy, and by developing industries, developing services, so that population keeps getting employed and keeps getting you growth. So population has that impact too. It becomes a burden if it is not educated, if it is undernutritioned, especially during the time of birth, and after that, vaccination did not happen on time. You understand that? So all these become a challenge. या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खिला भी दिए अगर आप बच्चे को, वो भी दिक्कत है उसके फ्यूचर लाइफ के लिए। ये एक ट्रूथ है। ऑल राइट, कि अगर आपने कोई बच्चे, हम जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, बच्चे को मोटा बनाते हैं खिला खिला के। एक मैं भी था, फिर मोटा हो गया हूँ, पर उसका कारण मुझे डॉक्टर ने यही बताया that I used to be a very fat kid. I was 80 kg in a 7th standard, 5 feet tall. तो मैं ऐसा दिखता था, बचपन से ही मोटा था, 6 kg का जन्म ही हुआ था। तो वो मैंने मदर से अपने कंफर्म भी किया था। आज माय मदर, was it 6 pounds or 6 kg? She said 6 kg. So 12 pounds odd is what I was. तो ठीक है, मोटा ताजा था। फिर और मोटा कर दिया लोगों ने, डबल मिल्क पिला देते थे कि मोटा बच्चा, इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो डबल मिल्क पिला देते थे। तो मैं खूब मोटा ताजा था, और साथ में मुझे मिसगाइड करते थे। मुझे बोलते थे बेटा तुम हेल्दी हो, तो मुझे लगता था अच्छा मैं हेल्दी हूँ। वो तो 7th आते आते जब अकल खुल जाती है तो लगा हेल्दी नहीं हूँ मैं, बेहतर मोटा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई एक्सरसाइजेज, डूइंग अदर थिंग्स। मेरे ब्रदर मुझसे हमेशा मजाक करते हैं दैट यू वर दिस एंड यू बिकेम दिस। सो बिकॉज आई वॉज हार्डली 5 feet टिल माई 7th standard एंड देन द हाइट पिक्ड अप एंड द वेट वेंट ऑन। तो वो ऐसा हो गया। तो मैं एक समय ऐसा आया जब 57 kg का भी हो गया विद द सेम हाइट। उसके बाद ये ऐसा ही रहा, एक्सरसाइज करता था, जॉग करता था। अब जब 40 क्रॉस किया मैंने, suddenly my weight starts picking up in spite of all my care, my eating habits being decent, I don't eat unnecessary things. So I consulted my doctor. I said, what's up? I developed hypothyroid also, so that is a challenge for me, no doubt, कि मुझे एक autoimmune disease है उसमें, कि मुझे hypothyroid है, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है कभी कभी। But other than that, I asked my doctor that okay, hypothyroid is one thing, but I'm taking care of myself and I do my exercises, I remain fit, but why do I keep pulling on weight? And he said, it all goes back to your childhood. That you were very bulky, and now your body's metabolism becomes the same because the hormones secreted become similar, and it will be more difficult for you than usual people to shed your weight generally. So, and it's true, till I remain very conscious, the weight still remains in control. But as soon as I get busy and all, my weight picks up very quick. And I did not see myself alone in that. I saw many among us, our cousins, जिन सबको मोटा बनाया गया था, facing the same difficulty. That happens. तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि हेल्थ इज अ फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्यों आगे चलकर कभी चश्मा लग जाता है, या उनको आप देखेंगे उनकी आईसाइट वीक हो गई, क्यों बचपन में हम काजल ठूसते हैं उनके आंख में। ये बोला जाता है, डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं मत ठूसिए ये काजल आंख में। लोग मानेंगे नहीं, लेकिन तो हमारे जनरेशन तक तो खैर डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे या बोलते नहीं थे। So they would have that. So we don't even know how we are harming. Perinorm is a very often used, medicine in India for vomiting and all. But Perinorm has been banned in US for 30 years now for kids below 12. It says that it hurts them. It hurts them in the longer run by creating kidney disease.
but it won't happen immediately. तो हमारे knowledge level जब कम होता है तो तब आपका population दिक्कत होगा, because if the population is unhealthy, if the population is illiterate or uneducated, then of course the population becomes a challenge. So I just stopped and tried giving you an idea that if somebody asks you, is population good or bad, take a nuancical stand, say that what do you do with your population decides what your population is. हमारे यहाँ और भी दिक्कतें हैं, not giving nutrition to the girl child, you know, एक सेट पैटर्न पे बड़ा करना. आप समझिएगा ये बात, फिल्म्स एंड ऑल में वो चिजल्ड बॉडी दिखाते हैं तो सबको लगता है ये सच, वो रियलाइज ही नहीं करते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड VFX इन दिस वर्ल्ड. देन एवरीबडी स्टार्ट्स चेजिंग दैट बॉडी, आई शुड लुक लाइक दैट, देन दे स्टार्ट हर्टिंग देमसेल्व्स बिकॉज दे आर नॉट वेल न्यूट्रिशन्ड. यू नो, सो दीज आर ऑल चैलेंजेस. हमने वो न्यूएंसेस बना दिए ना, अगर तुम मोटे हो गए तो लोग हंसेंगे, लेकिन कोई बहुत पतले उन पे कोई नहीं हंस रहे. तो उनसे भी तो पूछना चाहिए, भाई तुम जरूरत से ज्यादा पतले हो, खुद को ठीक करो. मैं भी था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जरूरत से ज्यादा, उतना होना नहीं चाहिए था. आई यूज्ड टू बी लाइक दैट, जानबूझ के नहीं. अगेन आई ट्राइड कीपिंग माई सेल्फ थिन, उसमें थोड़ा ज्यादा कर दिया था हरकत. सो आई वुड बी मोर देन what was needed. But you have to be an optimum balanced person, and this should have nothing to do with people laughing at you. It should be about health. But we don't connect it to health, we connect it to aesthetics, and that becomes a challenge. You know, तो ये आपको समझा रहा हूँ कि वो फिर बून की जगह बेन बन जाता है पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन किसी और बात में इंटरेस्टेड है. मैं गोरा क्यों नहीं दिखता हूँ, काला क्यों नहीं दिखता हूँ, अगर आप ऐसा सोचने लगे, अगेन आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम. जैसे मर्जी दिखते हो. मैं लोगों को देखता हूँ फोटो पे मेहनत कर करके अपने फोटो में खुद को गोरा बना रहे हैं. रेसिस्ट लोगों, वो भी खुद को लेकर. क्या जरूरत है, जैसा दिखता हूं, किसी को दिक्कत है तो मत मिलो भाई, मुझे क्या करूं. ये सिंपल सी बात है. आई एम व्हाट आई एम, व्हाट डू आई डू अबाउट इट नाउ? आई लुक द वे आई लुक. इफ समबडी हैज अ प्रॉब्लम विथ माई लुक्स, देन दैट पर्सन कैन टेक अ ब्रेक. व्हाई शुड आई गेट बॉदर्ड अबाउट समबडी एल्सेस लैक ऑफ एजुकेशन? यू नो, वो इलिटरेट है ना कि लुक्स देख रहे हैं, नॉट सीइंग द पर्सन बिहाइंड दोज लुक्स. तो ये आपको समझा रहा हूं दैट एंड ऑफ द डे दिस इज सोशल एजुकेशन. इसलिए लेक्चर दे, ये आपके पॉपुलेशन को स्ट्रांग बनाता है व्हेन दे आर सोशली एजुकेटेड. दैट इट्स नॉट द लुक्स, इट्स द पर्सन इनसाइड इट which is important. It's not the weight but the fitness that you maintain which is important. Not thin, very thin, not very fat. Look after your health care, look after your education. So when you sanitation and so on, then population becomes a boon. इंडिया का चैलेंज वही है, तभी मैं आपको ये बता रहा था. The challenge for India is maximum population increase in India in the last 30 odd years has been recorded among people who have been in poverty or slightly above it. This is a big challenge for India. India's upper class, India's upper middle class, they have started having lesser children. So you will very often see families with one child, families with two children, you know, and parents then don't have more children after that. But they are generally, you will see families who are already well-to-do, who could have afforded a third child, but they stopped at two. And you will see that families who are comparatively worse off, you know, और जो जिनके इनकम लैडर पे लेवल कम है, उनमें अगर 6 kids हैं या 7 kids हैं या 5 kids हैं, then that becomes too much of a pressure, and it also weakens the mother, because childbearing is a huge you know, burden on the body. So ideally then mother should get the choice whether she would like to have a child or not, entirely, because she has to bear it. You know, so she should get that choice. And given mother getting a choice to bear a child, believe me, there won't be too many children. They have a lot to give to a child. You know, and educate the female along with that. That will be a natural contraceptive. कि अगर फीमेल काम कर रहे हैं तो चाइल्ड बियरिंग उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. तो अपने आप ही आप देखेंगे कि बहुत जगह जो वर्किंग फीमेल हैं उनके एक किड होते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको पता है एक से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते. अगर ये हुए तो फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी. तो ये आपको समझा रहा हूँ. पहले के समय में ज़्यादा किड होने का एक और कारण था, बिकॉज चिल्ड्रन वर टेकन एज इंश्योरेंस. अभी भी बहुत जगह चिल्ड्रन आर टेकन एज इंश्योरेंस. You know, so what is child as insurance? That I will grow old and then my child will look after me. So that is taking child as insurance. साथ में क्या होता था? High infant mortality, which we were experiencing during the British and after that. So the parents were uncertain how many of them will survive. So you need to take a probability of survival of the child, and then among those who have survived, what is the probability that at least one will look after me?
It's an economic model. Some of you would have studied it in your development theory. So I'm just engaging you with that economic model that, one thing is probability, how many children will survive and won't die. Second, along with that, the probability that among those who have survived, at least one will look after me in the old age. And that then means that I'll think, okay, maybe if I'll have 10 children, 6 will survive. And maybe then if I have 6 children, at least one will look after me. So I actually wanted one child who would look after me, but I ended up having 10 because of the probabilities involved. And now, after independence, as medical facilities, etc., went better, it meant that when the IMR started coming down, and out of my 10, actually 4 did not die. Now 2 were dying and 8 were surviving. And that pushed up population big time. So this started happening in India. तो आप देखेंगे 1951 to 61, 61 to 71 and 71 to 81 को population explosion का time बताया जाता है Indian system में. I hope we all can keep these things in mind, broadly at least. I'll give you write-ups on these, we'll discuss all these. But ये कुछ topics हैं जो UPSC ने एक बार पूछा, वो भी ये इतने detail में नहीं पूछा, बस एक बार population का role in development पूछा, वो भी one time in the last 10 years. तो मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ when test series happens that what is the role of population and what can be the policy issues and what have we done so far. We'll go into all that discussion. But keep it in mind, this basic idea of population. And I actually meant it. आप अपने आंसर में ये बात mention जरूर करिए that confident humans who are conscious about their intrinsic value are important for socio-economic development. I should be bothered about my intrinsic value, not how I look. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज ही कोई मुझे सुबह मिले, उन्होंने बोला अरे आपका दाढ़ी वाड़ी बहुत बढ़ गया है, आप क्लास कैसे लेते हैं? जवाब ही देने लायक नहीं समझा मैंने ये बात. मैंने बोला क्या बताएं, बस फंसती नहीं अभी तक मुंह में, तो बोल ही लेता हूँ. कैसी बात है कि दाढ़ी बढ़ गई तो क्लास कैसे लेते हैं? बिजी हूँ, अननेसेसरी काम है. मुझे हमेशा लगता है ये कि वीक में एक दिन शेव करिए, बाकी टाइम लगे रहिए. 15 मिनट लगाना पड़ता है इसके लिए, तो 15 मिनट नहीं निकाल पा रहा हूँ, निकाल लूंगा, कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई. अब लेकिन मैं तो इकोनॉमिक्स बोलने आया हूँ ना, मेरी दाढ़ी बड़ी हो या मेरे बाल स्पाइक कट में हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है. अल्टीमेटली आई हैव गॉट टू स्पीक इकोनॉमिक्स. तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है that what I will be valued at is my economics. I won't be valued at by whatever I look like. So one has to be just be careful on that. All right, that is intrinsic value idea. Okay, then you write further in this. So when we talk about the benefits of PDS, you write first, it resulted in significantly reducing hunger as reflected by data on malnutrition. Second, you write, it resulted in reaching out to poors in rural areas, and deprived sections of population by establishing PDS shops even in remote areas. Third, it created employment
by developing supply chain ranging from procurement to distribution. I'm repeating myself. It created employment by developing supply chain ranging from procurement to distribution. I hope you can follow that. When I say created supply chain, so somebody will procure, then transport, keep it in the storehouse. In the storehouse, there will be a storekeeper, there will be workers. Then they will take it to the market, distribute it, sell it off. Somebody will be there as accountant, somebody will be there as manager, and so on. So multiple employment were created in each part of that supply chain. All right, people working in the godowns and all. Next, you write, it provided food at cheaper rate. It provided food at cheaper rate, which increased disposable income. It provided food at cheaper rate, which increased disposable income and led to higher consumption of other commodities. Higher consumption of other commodities. Okay, so to be honest to you, some economists have claimed that this can happen. All right, there have been people like Pranab Bardhan, there have been people like Professor Amartya Sen who have claimed that this can happen. We don't have a very solid empirical evidence for it, but the intuition behind it is pretty strong. That food is a necessity and you're giving it to me for a cheaper rate, so definitely then it saves my money which I can use for other things. All right, so we will include it as a point because in economics literature it is accepted. In most of the places you will see people quoting this. Then you write next, fifth point, it resulted in increasing the supply of not only food grains, but other essentials also at relatively cheaper rate. Relatively cheaper rate. Then you write challenges. And in challenges you write, first point, it has resulted in regional inequality. It has resulted in regional inequality due to difference in different states with an apostrophe S, infrastructure, different states infrastructure regarding procurement and offtake of crops, regarding procurement and offtake of crops in PDS. Offtake means how much have you taken up for distribution under PDS. Then you write next, third, okay, second, you write, it has resulted in increased demand for wheat and rice, which is ecologically less sustainable.
ecologically less sustainable. I hope you get the answer. More wheat, more rice, the soil and water and so on. Everything that we discussed in agriculture. Third, then you write, it has put large burden. It has put large burden on budget of the government. On budget of the government. In a bracket you write, the food subsidy bill of central government between 2021, when I say 2021, I mean 2021, between 2021 to 2024 is more than 1,000 lakh crore. More than 1,000 lakh crore. ऑलराइट, कितने सारे जीरो आएंगे आप इमेजिन कर सकते हैं उसमें. मैं आपको बताता हूं क्यों. ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक 2020-21 central government's food subsidy bill was around 5.2 lakh crore. That was the food subsidy bill we had, 5.2 lakh crore. But there is a catch to that. Let me tell you that also. Out of this 5.2 lakh crore, around 2.5 lakh crore was loan that the government had taken from Food Corporation of India, or the unpaid bills of Food Corporation of India, which used to be an off-budget borrowing. We never used to show it in the budget, but end of the day the government had to pay it. Government paid that in that year. ऑलराइट, तो ये एक्स्ट्रा 2.5 लाख करोड़ था. ये उस साल की पेमेंट नहीं थी, बट ये पिछले साल की जो अक्यूमुलेटेड पेमेंट थी उनको भी क्लियर किया गया. सो दैट इज व्हाई द बिल बिकेम 5.2 lakh crore. Then 21-22 it was around 2.97 lakh crore. So that's another 3 lakh crore. All right, and then that it came to, and then in 2022-23 there was another 2.5 lakh crore. Last year another 2 lakh crore. So more than 11 lakh crore has been. I made you write 1,000. आप 2 zero हटा दो. All right, make it more than 10 lakh crore. Lost concentration. You make it more than, वो मैं इंग्लिश हिंदी में मिक्स कर गया, मिलियन बिलियन और इसमें. Anyway, so more than 10 lakh crore. Unfortunately, my mind thinks in millions and then I decode it into lakh crore. But all right, so make it 10 lakh crore. But that's still huge amount that we are paying. और अगर मैं इस साल के बजट को ऐड कर लूँ, जो इस साल दे रहे हैं, it's adding up to 13 lakh crore in last 5 years or 4 years. So that's huge money we are putting on food subsidy, and then still get ranked low with respect to indices on hunger, etc. That is the challenge that we are having. All right. So I have spent more than 10 lakh crore food subsidy without properly removing the challenge of undernutrition. Then you write next challenge. There are both inclusion errors. Next challenge. There are both inclusion errors and exclusion errors. Both inclusion errors and exclusion error in distribution. So remember, when we use the word inclusion error, that implies we are talking about including those people who are ideally not required to be included. Rich people included. Exclusion error, excluding the poors. All right, that is ideally we should have included them, but we ended up excluding them. So exclusion error. तो जब आप गरीबों को include नहीं करते, वो होता है exclusion error. और जब आप rich को include कर लेते हो, तो वो होता है inclusion error. All right, so inclusion error is when you include the rich, and exclusion error is when you exclude the poor. All right, so that is inclusion error and exclusion error, both happening in PDS in spite of TPDS. TPDS के बावजूद ये चल रहा था.
Then you write another one. Loss of food and resources, loss of food and resources due to leakages during transportation and storage. All right, okay, let's see this. So देखो गवर्नमेंट ने तरह तरह के कानून बनाए हैं बचने के लिए. एक उन्होंने किया, पहले बोरे में ट्रांसफर होता था तो लोग बोरा गायब कर देते थे. They would take away the sack, and then by the time the truck would reach the godown, 5-6 sacks were gone out of say 70-80 sacks, 100 sacks. तो गवर्नमेंट ने एक तरीका बनाया, काउंटिंग होगी सैक्स की when it is loaded on the truck, and then counting होगी सैक्स की when it is taken away from the truck, to make sure that sacks are not removed. Okay. तो कुछ लोगों ने फिर क्या किया, चूंकि काउंटिंग होगी सैक्स की, तो अब लोगों ने क्या किया, सैक के अंदर पेबल भर देंगे, स्टोन भर देंगे और उसको डाल देते थे ट्रक पे. अब वो पहुंचा, काउंटिंग हुई, चला गया गोडाउन में. तो धीरे धीरे, और ये बड़े समझदारी से किया जाता था. इट वाज डन विद अ लॉट ऑफ alacrity, that they won't do it big time. So they will take 5-6 sacks away from a 100 sack truck and then replace it with sacks of pebbles and stones. Then the government said, okay, one way we can stop it further from happening is if we can make sacks with FCI printed values. So in that case it is easy to identify. मतलब कोई भी बोरी होती थी तो बदलना आसान था, तो बोले कि अब ऐसी बोरी बनाते हैं जो FCI का प्रिंट होगा जिस पर, तो अब वही FCI के गिवन सैक से ही ऐसा किया जा सकता है. But counterfeit is everywhere. So now what these people would do, they will take the counterfeit of those sacks, again still take away the 5 sacks, reload it and put it on the truck. The truck reaches. Now it's very difficult to actually find out that 5 sacks out of 100 will have pebbles or stones, because you can't keep opening every sack and then putting it. And then it is known after a couple of years, after 1.5 years, that my sack had a pebble in it or my sack had haystack in it, that kind of a thing. तो ये हमारा एक चैलेंज अगेन बनता जा रहा है, that this, and remember, if it is a 10 lakh crore rupees given in the last 5 years, now 5% adds up to some huge amount, 50,000 crore siphoned out, by people. तो ये एक चैलेंज जरूर है PDS का, that things get siphoned out in between, बीच से ही गायब हो जाती हैं चीजें. All right, इसमें तरह तरह की कोशिश हो रही है. अभी एक और कोशिश शुरू की गई है. I hope it succeeds. It's putting GPS in the trucks that are transporting it. So when you put GPS in the trucks, as soon as they remove it from the way, the driver is immediately questioned that where are you taking it, why are you taking it away. But even then it has been reported that some people are able to do it by running one running truck by the side of the other running truck, and then they are disposing it and doing it on the other side. So it becomes a huge comedy. I mean, जब आप भारत का करप्शन देखेंगे तो देखिए कमाल हरकतें होती हैं हमारे यहाँ कि एक ट्रक चल रहा है दोनों साथ साथ and so on. अभी एक और प्रपोजल है that if we can equip the trucks, अभी ये थोड़ा कॉस्टली है तो पूरा नहीं किया जा रहा, but it's a proposal in Ministry of Finance that equipping the trucks with cameras that can be put behind the truck. तो उससे काम चलाने की कोशिश करें. But again, it's more about transmission mechanism being worse. Yes. True, that can be done using a QR code and so on. In fact, if you ask me, the best part will be if we don't purchase in such a bulk. That is the best part. We are purchasing a lot which we don't also need. Like Government of India procures something like 65 million tons, 70 million tons of food grains from the godown, but Government of India never disburses more than 50 million tons, 45 million tons. Never. तो 45 million tons की अगर मुझे ज़रूरत है, तो मैं 70 million tons खरीदूँ ही क्यों? 25 million ton का मतलब 25,000 crore kg. That is what I am buying extra. क्यों इतना पैसा मैं extra लगाऊँ? I would rather not do that and use my money for better purposes. So that is one. Then of course there can be QR codes, there can be cameras that can be fit. So but people are trying to game everything. और उसका कारण है, आप समझिए मेरी बात. कारण क्या है? ये 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की बात नहीं हो रही है ना. एक साल में 10,000 crore rupees की बात हो रही है. It in itself becomes an organized business. Understand that.
Because people involved know that, okay, even if some extra expenditure is needed, do it because my profit margin is huge. I can make huge money by siphoning it out. So that is the real challenge, that when corruption is at a large level, then it creates its own ecosystem. Gold smuggling ने अपना ecosystem बना लिया था ना. Gold smugglers थोड़े खुद जाके smuggling करते थे. They will have people doing it for them. They will pay the government also. They will pay the police. They will pay the politicians, and they will be in a very good book of everybody, becoming rich through gold smuggling. So ये दिक्कत है कि जब बहुत पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, the whole ecosystem gets problematic. So उसको रोकने का तरीका वही होता है, use technology, use your science, and make sure that keep making it more difficult. Because the more difficult you make it, it will then people try finding something else. कैसे इसमें अब मुश्किल हो रही है, किसी और चीज़ में चोरी की जाए, चलो हम देखते हैं, तो कुछ और स्कोप देखेंगे, फिर आपको उनको वहाँ रोकना पड़ेगा. But it's like displacing them from the bubble and doing it. Okay. एक चीज और उसमें ध्यान रखनी चाहिए, a lot of this corruption happens in the interstate transfers because the policing changes, and when the policing changes, again some people try taking advantage of that. So this is again a challenge we will have. Okay, then you write below that, change the paragraph now and write, in 2013, government introduced, this is actually further now, after PDS. In 2013, government introduced National Food Security Act as a life cycle approach to provide food security at all points of time. In life, all points of time in life. Under NFSA, government promises to provide, and then you keep it as A, B, C, D or 1, 2, 3, 4. So you write 1, rupees 6,000 for mother and the child in 6 equal installments, that is 1,000 rupees each. When we say 6 equal installments, it's 1,000 per month. 6 equal installments over 6 months for nutrition. Over 6 months for nutrition. Then you write next. The government promises nutrition for children in preschool, through ICDS, that is Integrated Child Development Scheme, through ICDS, and nutrition in the school through midday meal scheme. Through midday meal scheme. Full stop. Both of these have been combined under Poshan 2.0, POSHION, under Poshan 2.0. Next, you write, third point. At the age of 18,
and after that, at the age of 18, and after that, government promises free food grain. Remember that 1 rupee, 2 rupees, 3 rupees per kg is gone now. So we will be writing free food grains. So free food grain for up to 5 kg per adult in any family. Up to 5 kg per adult in any family. This is an extension of PM Garib Kalyan Anna Yojana. PM Garib Kalyan Anna Yojana. And then you write, after the age of 60, free food is available. Free food is available for the individual comma, up to 7 kg per month under Antyodaya scheme. Up to 7 kg per month under Antyodaya scheme. So that is why it is called life cycle, that from birth till old age and death, food security being promised. Put a note below that and write, the scheme has identified beneficiaries. The scheme has identified beneficiaries as 75% of rural population and 50% of urban population. 75% of rural population and 50% of urban population according to Socio-Economic Caste Census 2011. Socio-Economic Caste Census 2011. It's SECC. You can write that. 2011. And change the paragraph. Write one more thing. The scheme does not apply. Make it the law doesn't apply. I'm so sorry. You write, the law does not apply in case of a war, or earthquake. War or earthquake. So government says we are not liable to give you food security if such a thing happens. Other than that, we will be giving you food security. Alright, that is the rule here. आप अभी के लिए एक heading दे दो. Third point on poverty alleviation. You write financial inclusion. Alright. You write financial inclusion. So we will talk on some schemes tomorrow on financial inclusion and how it has been done. And again, carry your notes because there are few things we can save time on. एक मैं आपके लिए आज upload कर दूंगा labor law reforms पे video, पर उसे कल की class के बाद देखना. See that video after tomorrow's class. All right? I'll see you then tomorrow, 3 o'clock again. 2:45 rather. I can see you tomorrow. Thank you. They are questioned, Ujjwal, but it's all a nexus, no? They were defined as families which lay under the FGT index, Sambhavi. Okay, people online, I'll see you tomorrow, 2:45 then. Thank you.